Elections and CNN News 18 are synonymous. Election studio, unlike any other. Scale, sophistication, and superiority. Full screen that leaves you spellbound. Presentation that keeps you hooked. If it's election verdict, CNN News 18 is your destination. Mark your date. Results with News 18. You're watching our special election coverage. When it comes to elections, it is CNN News 18. I'm Shivani Gupta. I'm joining you live right now from Varanasi. From 7 a.m. onwards, I've been visiting various polling booths in and around the constituencies, which fall under the Prime Minister's Lok Sabha constituencies. As many as 5 seats that fall under the Lok Sabha seat. You know, there's Varanasi North, South, Varanasi, Kant, and 2 others. The last time around, the NDA had swept these 5 seats, 4 to the BJP, 1 to the Apna Dal, and all of those factors will be tested once again. The Apna Dal is still with the BJP, although there's an Apna Dal K faction which is with the Samajwadi Party. Om Prakash Rajbar's SBSP was with the NDA last time around. It is now with the Samajwadi Party. And when we talk about phase 7, the final phase of the UP elections, all of these smaller caste parties will have a role to play. In fact, it is going to be a make or break phase as far as these parties are concerned. So in and around Varanasi, we met a lot of voters, especially women voters who had come out early at around 7 a.m. and there was a fair bit of enthusiasm. Varanasi is tending to do a little bit okay as far as the voting turnout is concerned. We'll get you all of those numbers, those voices, and the key candidates that we spoke to from across the 9 districts and 54 seats that are polling as we speak. And our experts will also be joining us in our rolling coverage. First up though, I want to play out this report from Mao. Now Mao is one of those districts that is going to polls, and in its 4 seats, the BJP had won 3, the BSP had won 1. That BSP win came from Mao Sadar. That is where Mukhtar Ansari, the infamous mafia don, had won. That is his traditional seat. He's been winning there for multiple times. This time around though, Mayawati decided she's not going to give a ticket to Mukhtar Ansari. So what has happened is that his son Abbas Ansari is fighting from the Samajwadi Party alliance, but he's actually fighting from the SBSP, the Om Prakash Rajbar party's symbol, the stick, and not on the cycle. So this is the area where the BJP did well last time around. The BSP has been in contention, and this is the area though the Samajwadi Party will want to dent the BJP's aspirations. There's Azamgarh, Mao, and several other districts where the Samajwadi Party will hope that with their smaller party alliances, they can dent the aspirations and the hopes of the BJP, for whom this phase is a matter of prestige. That plays out in Varanasi. But for the BJP, this is a phase where they have room to improve because they didn't really sweep as far as Purvanchal is concerned, especially the phase 7 Purvanchal. So we're going to show you all of that and talk to our reporters, talk to our experts. But first up, here's this report from Mao, the candidates and more. All through the UP campaign, Yogi Adityanath has been hammering home the point of how tough his government has been, bulldozing Mafia Raj in the state of Uttar Pradesh that has been ruling the roost under previous governments. And that message rings especially loud in Mao, the seat of 5-time sitting MLA Mukhtar Ansari. This time though, his son Abbas Ansari is fighting on his father's seat, although from the SP-BSBP combined, but fighting on the stick symbol, not the cycle. Abbas had previously lost the nearby Varanasi seat assembly polls in 2017 to BJP's Bhadohi. This time though, he believes he's in the pole despite his father's image. यहाँ पर हम लोग हमेशा अकेले लड़े हैं जनता की ताकत के साथ, और इस बार तो अखिलेश भैया और ओम प्रकाश चाचा का भी आशीर्वाद प्राप्त है, तो इस बार तो कोई लड़ाई ही नहीं है। मैं आपको इस बात के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि जितना वोट बीजेपी यहाँ पाएगी उससे ज़्यादा से इलेक्शन जीतूंगा। 27% ऐसे बीजेपी ने कैंडिडेट्स इस चुनाव में उतारे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं। हमारे ऊपर जो भी मुकदमे हैं, कम से कम हम कोर्ट का ट्रायल तो फेस करते हैं। हम उन बेशर्मों में से तो नहीं है कि अपनी कलम से अपने मुकदमे हटा के और खुद को शरीफ घोषित कर लें, संत घोषित कर लें।
मैं इस देश की, हमारा परिवार इस देश के लोकतंत्र और संविधान का इज्जत करता है और उसके साथ साथ हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने आज तक बताइए किसी भी केस में विधायक जी को कन्विक्शन किया हो, मेरे पिता को। मेरा सवाल ये था कि आपके पिताजी ने क्या कहा, कुछ तो बातचीत हुई होगी, अब आप लड़ रहे हैं उनकी सीट से। तो सबसे बड़ी उनकी लेगेसी के लिए तो लड़ रहे हैं एक तरह से। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं उनकी लेगेसी की नहीं, मैं जनता की आवाज बनने के लिए लड़ रहा हूँ। हाँ। जनता ने पिछले 25 सालों से उनको आवाज बताया। आप एक नाम बता दीजिए इस पूरे भारतवर्ष में, एक व्यक्ति कि 5 बार कोई प्रधान भी बना हो और वो अपने प्रधानी के क्षेत्र में ना रहता और प्रधान बना हो, मगर जनता ने बनाया है ना। ये तो सबूत है ना। क्या कहा उन्होंने? कैसे? उन्होंने कहा जाओ, हमेशा लोगों की खिदमत की है, क्योंकि 10 साल से मैं यहाँ हूँ, मैंने ही लोगों का काम देखा है, चीजें देखी। सिर्फ कहने के लिए मेरे पिता विधायक है, उनकी साइन चलती थी, काम तो सारा मैंने किया है, तो हर आदमी इस बात को जानता है। Currently lodged in Banda jail, Mukhtar had won the Mao seat on the BSP ticket in 2017. Against his son this time, BSP has fielded its state president Bhim Rajbhar. But in contest is also a man who's been fighting the mafia don for very personal reasons. Ashok Singh, the BJP candidate, is a non-politician fighting his very first election. His brother was allegedly murdered by Ansari's men in 2009 and the case is ongoing. He says Ansari clan's time is up. गलतफहमी पाले हुए हैं तो गलतफहमी का कोई इलाज होता नहीं है। पड़ला उनका भारी रहता था, उसका कारण था, वही बताएंगे ना। 5 बार से मैं विधायक रहा हूँ, 5 बार से विधायक माफिया पसंद सरकारों की वजह से होते रहे हैं, जो 5 बार से विधायक रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री है। यहाँ माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर भी चलेगा और विकास भी, दोनों एक साथ चलते हैं। तो जो विकास के साथ है वो विकास के साथ है, और जो माफियागिरी करेगा उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। और ये जो बोल रहे हैं जितनी बातें ना, सब फ्रस्ट्रेशन में। क्यों मैदान छोड़कर भग गए मुख्तार अंसारी? लड़ना चाहिए था ना। अभी ऐसी उनकी कोई उम्र नहीं हुई कि चुनाव लड़ने लायक नहीं है, मैदान छोड़कर भग गए। मेरी लड़ाई है जिसे मैं लड़ रहा हूँ, और मैं पहले अकेले था। जब से मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य बना हूँ, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसका मैं सदस्य हूँ। और मुख्तार अंसारी की हमारी लड़ाई व्यक्तिगत अपनी जगह, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ, उनका प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी से। यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेज है, न कि मेरी और मुख्तार अंसारी की। He is hoping to ride on the bulldozer mania of the BJP that has become a symbol of the Yogi government itself. Supporters seen bringing bulldozers to Yogi's rally in the area. माफिया माद यहाँ पे बड़ा रहेगा या बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की सरकार का बड़ा रहेगा? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, पूज्य योगी जी की सरकार में किसी माफिया की औकात नहीं है कि वो खड़ा हो सके, किसी को परेशान कर सके। आज आप देखी होंगी जितने विद्यालय कॉलेज होते थे, बच्चियां पढ़ने जाती थी, सोहदे अगल बगल खड़े रहते थे, तमाम तरह की फब्तियां कसते थे, बुरा बर्ताव होता था। आज कहीं घूमकर आप देख सकती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसी सौदे की, किसी माफिया की औकात नहीं है कि किसी बहन बेटी के साथ गलत नजर उठाकर देख सके। In Mao District, though, the BSP factor is also very crucial. Across its 4 seats, traditionally it is considered to be a BJP versus BSP fight. Will Mayawati be able to hold on to that vote share? And will that truly hurt the Samajwadi Party and Om Prakash Rajbhar combined? That's really the big question to watch out for. With camera person Narendra Singh in Mao, Shivani Gupta, CNN News 18. So that was, of course, the contest from the Mao Sadar seat. A very, very interesting result that will be watched out for, because the BJP has been mounting the campaign of bulldozing against the mafia Raj that was prevailing till their government came to power. I'll talk to our guest joining us, Ambikanand Sahai, a political expert joining us. We'll go to him in just a bit. But let me also go across to my colleagues, Pranshu Mishra and Siddhant, who are joining us from Lucknow and Azamgarh, respectively. Azamgarh is going to be one of those key districts, which is, of course, the Samajwadi Party bastion traditionally. But Pranshu, I want to come to you on the mafia topic, on the mafia issue, because that is one of the big issues that will dominate the discourse and has dominated the discourse throughout. Law and order, fight against mafia, established mafia and mafia dons. But here in Purvanchal, especially in phase 7, for example, Mao and Ghazipur, that's going to play a very big role.
Shivani, see, it's a tricky question for the Bharatiya Janata Party. They have been talking about and making a lot of claims that how mafia has been restrained in the state of Uttar Pradesh, how law and order situation has improved. I'll say that what opposition has been saying is that opposition always says that you go and see the NHRC, the data, and see that the data shows that crime has increased in Uttar Pradesh. They also tell you about several cases, big cases, which have happened in Uttar Pradesh, right from that case of Vikas Dubey to other cases. And the other big charge which has been against the Yogi government is that when it came to action against the mafia, that was only from the particular community. So Mukhtar Ansari, the biggest symbol of organized crime against whom the government has acted, comes in from a particular community. And therefore, if you remember, Akhilesh Yadav has often asked about the particular mafia turned politician Dhananjay Singh from Jaunpur, that how despite having a reward he was caught on camera playing football. Then they also talk about Sushil Singh and others in Chandauli. So that charge against the BJP had been from the opposition quarters is that you have acted against the mafia in a selected fashion. You haven't been keen to take on the mafia in its entire might, but you have seen the caste and the religion when it comes to the action against the mafia. But having said that, the general perception, if you talk about the people's perception, the perception is, as compared to the past, the quality of law and order or the law and order situation has significantly increased in the state of Uttar Pradesh. That is, I think, a perception on the ground. And you were talking to the women voters in Varanasi. I have also spoken to many others while visiting other parts of the state. The general sense among the people is that despite some glaring big cases of law and order situation, for example, like that of Vikas Dubey, overall the law and order situation has improved. But we all know that the state government has often also been questioned a lot and has faced a lot of heat about its encounter policy or the Thoko Niti, and the fact that action against mafia has been on the selective lines, as according to the charge that has often been made by the opposition parties. Yes, absolutely. We'll have to wait and see if the law and order issue really benefits the BJP. This has been one of their big plans. From the Prime Minister to the Chief Minister, all of them keep talking about this everywhere they've gone. And women's security is tied to that issue. Let me go across to my colleague Siddhant also, who's joining us. Siddhant, you've been in Azamgarh, as I've been in Varanasi from 6 a.m. this morning, and talking to the voters and looking at the kind of enthusiasm that the voters are displaying. So give me an update of the vote percentages that are coming, mostly around the 20% mark now at 11 a.m. in the 9 districts that are going to polls today, and what you've been getting on the ground, the sense that you've been getting from the voters. That's right, Shivani. Till 11 a.m., the voter turnout is not unprecedented. But it is expected that by the end of the day, especially in the rural parts of Azamgarh, it may cross 60% mark. I'm being joined by some of the voters, Shivani. Let's take this question to them only. सर ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर को जो मुद्दा बनाया जा रहा है और पूर्वांचल में मतलब जो एक तरीके से माफिया राज था एक वक्त पे कि हर एक इलाके का एक माफिया होता था और बाहुबल होता था, वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है. तो क्या सच में लॉ एंड ऑर्डर इशू है या भारतीय जनता पार्टी इसको इशू बना रही है और लोगों को बता रही है? क्योंकि अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि आप अगर क्राइम रिकॉर्ड उठाएंगे तो क्राइम का जो रेट है वो बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ है. ये सिर्फ एक परसेप्शन है जो बनाया जा रहा है. देखिए वो क्या कर रहे हैं मैं उसको इस बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपना छोटा उदाहरण दे रहा हूँ. हम व्यापारी समाज से ताल्लुक रखते हैं और हम लोग के व्यापारी अगर फील्ड में जाते थे तो ये पूर्व 5 साल पहले कोई ऐसा महीने में दिन नहीं होता था कि हमारे नकदी न लूट जाती हो. अच्छा, आज 5 साल से हो गया. अगर किसी का पैसा भी हमारे समझ से किसी भी व्यापारी का कहीं होल्ड नहीं हुआ, कि चैन नहीं हुआ, सुरक्षित महसूस करते 100% है. जो अपराधी माफिया फोन करके धमकी भी देते थे ये हो जाए वो हो जाए, आज तक कोई धमकी नहीं दिया 5 साल में. लेकिन ये सवाल आपसे लेना चाहूंगा, 10 सीटों में से जिसे कहते हैं ना प्रधानमंत्री का वाराणसी है तो अखिलेश यादव का आजमगढ़ है और तो 1.5 घंटे का फर्क है दोनों ही जिलों में. तो इस बार क्या लगता है बीजेपी का जो अपना नंबर वो बढ़ा पाएगी या इस बार फिर सपा और बसपा की लहर रहेगी? बीजेपी नंबर बढ़ाएगी. हाँ. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये अखिलेश यादव जी का ही गढ़ है. ऐसा MY फैक्टर काम कर जाता है ना और बाकी जातियां भी उनके साथ चली जाती हैं. पहले ये काम करता था, लेकिन अब जनता जो है जागरूक हो गई है. अब जनता जो है इस तरह का अगर माहौल होता तो अखिलेश यादव जी वहाँ क्यों जाते, यहीं से लड़ते. अच्छा जी. अच्छा,
आप बताइए कि ये भी कहा जाता है कि भाई जो सबसे ज्यादा विकास किया है समाजवादी पार्टी ने वो मैनपुरी सैफई के बाद आजमगढ़ को दिया है। डिग्री कॉलेज दिए, मेडिकल कॉलेज दिए हैं। देखिए ऐसा डिग्री कॉलेज तो बहुत पुराने यहाँ पे हैं सब, चाहे सिवली हो, चाहे डीएवी हो, चाहे चंडेश्वर हो, कोई डिग्री कॉलेज नहीं। बहुत दिनों से विश्वविद्यालय की मांग थी, जिसको अभी जाके माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी पिछले महीने में उसका शिलान्यास किया है और राजा सुहेल देव के नाम पर सुहेल देव विश्वविद्यालय का वो सपना साकार हुआ यहाँ जाके। तो कहाँ विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया, और पीजीआई समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना था, लेकिन वो सुचारू रूप से चल नहीं पाया। चलिए भी बताइए, अभी जो वोटर टर्नआउट है वो अच्छा नहीं जा रहा है, 20-22% के करीब जा रहा है वोटर टर्नआउट। क्या लगता है शाम तक 60 का जो आंकड़ा है वो पार कर पाएगा वोटर टर्नआउट? निश्चित रूप से शहरी इलाकों में जी बिल्कुल। हाँ, तो अगर 60 पार किया तो क्या बदलाव के लिए वोट किया है लोगों ने? आपके पहले सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा जो आपने किया था। आपने कहा कि मुकदमे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, ऐसा अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि नेशनल क्राइम डेटा, हाँ वो डेटा रिकॉर्ड इसलिए ज्यादा होगा कि हमने मुकदमे क्राइम को होने के बाद मुकदमे दर्ज होने पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। अखिलेश जी के टाइम में तो मुकदमे दर्ज, ये एक दलील है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, ये दलील है। ये दलील नहीं, ये सच है। हम लोग जाते थे वापस कर जाते, अभी तो तुरंत एनसीआर दर्ज होता है कि आप नहीं, आप अपना मुकदमा लिखा, उस पर कार्रवाई होगी। एक चीज। दूसरी चीज, बदलाव इसलिए भी है कि कुल 5 साल में 2 साल कोविड ने ले लिया। किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल समय था वो, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज। लेकिन जब हम आते हैं 3 साल बचा हुआ, जिसमें 6 महीना आपका इलेक्शन लेके जाता है। 2.5 साल में जो काम योगी जी ने किया या मोदी जी के डबल इंजन सरकार ने की, लोग पब्लिक के बीच में जो मैसेज देने की कोशिश की, वो बहुत ही फेयर और बहुत ही क्लीन। ये एक पॉइंट है। और यहाँ पे आजमगढ़ में एक ये भी बात मुझे बताई गई कि कोविड के वक्त में प्रशासन बहुत सक्रिय था यहाँ पे, और योगी आदित्यनाथ खुद ध्यान दे रहे थे आजमगढ़ जिले पे। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, यहाँ से सिर्फ एक एमएलए हुआ करता था हमारी पार्टी का, और योगी जी हर महीने यहाँ आते रहे पूरे 5 साल में। शायद कोई ऐसा महीना गुजरा हो कि वो ना आए। अखिलेश यादव सिर्फ 2 बार आए, वो भी निमंत्रण करने आए। 2 बार निमंत्रण करने आए। So there you see, Shivani, these are some BJP supporters, those who are with me, and they are telling that how safe they have started feeling. The business community, especially in Azamgarh and the other community, the law and order has become better in this state. And they also have to say that Akhilesh Yadav has only come twice to Azamgarh. It was Yogi Adityanath who used to come almost every month to Azamgarh, despite having only one MLA from this district. So, but having said that, Shivani, going by the numbers, going by the caste equations in Azamgarh, Samajwadi Party still has upper hand and is in a better position on all the seats because they have MY factor with them. They have also given candidates strategically of the community, of the caste, which are dominating in some of the constituencies. So those things have been done here on ground, and this is perhaps the reason that Akhilesh Yadav is very confident that this time his number will increase here. Last time Samajwadi Party won 5 seats, but this time their target is at least 7 to 8 seats. Back to you, Shivani. All right, let me take that forward with Ambikanand Sahai, who's also joining us. Is law and order the biggest issue? Because there's been the issue, interestingly, that the constituents there talked about how COVID was handled. The fact that there is no great anger against the government despite, UP being the most populous state, not with the best primary health care facilities, and yet on ground you don't really hear people angry about the COVID management. That, of course, goes to the credit of the incumbent government. There was free ration that was given both from the center and the state. That's a big issue that people are talking about, and virtually everywhere, in every district and every seat. But focusing on law and order and women's security, Ambikanand Sahai, do you believe that this is going to be the separator between the two sides, the issue of law and order? I don't think so. I'm sorry to say this, Shivani. There are very many other issues that have gripped these elections. For instance, a purely UP-centric problem is that of Avara Pashu, Avara Pashu, Chutta Janwar. That has been a pan-Uttar Pradesh issue in these elections. Thanks to the candidature of this Abbas Ansari, son of Mukhtar Ansari, law and order has become a big issue in Mao and Azamgarh. But I don't think ultimately what matters more is
the caste combination. That is a reality in these parts of the state. There is another factor. You see, as I always say, the magnificent victory of BJP in 2017 happened only because the very Kamandal was mandalized. They formed a rainbow social combination that was unbeatable, and they swept the polls. This time the story is largely different, with very many Dalit castes having moved away already to the SP camp. Yes, Shivani. And why is that? Why do you say that that certain castes, especially the Dalits or the MBCs, parts of the OBCs have moved away from the BJP? On the basis of what? Because in 2019 also the BJP did fairly well. So how and when did that Hindu vote consolidation break away? That happened after there was a huge caste-wise goof up in the 69,000 teachers' appointment, and what followed later was desertion of flag bearers of identity politics belonging to the extremely poor sections. They moved away from the Bharatiya Janata Party and joined hands with Samajwadi Party. That was the time. Yes, Shivani. Okay. All right. All right. Sir, stay with me. Let's bring in some more voter voices. I spoke to some voters earlier as well. I am generally just surveying the seats in and around the Lok Sabha Varanasi constituency. So seats like Varanasi, Kant, North and South. Let's listen into some voters I spoke to. You voted already? So woman voter very important. सब parties आपका vote चाहती हैं. Right, everybody wants our vote, and the half of the citizen are the women, so we need to cast our votes. Yes. Are right. So what is the main issue on which you have cast your vote? I've cast my vote on the basis that the person who will look after my city Varanasi, and of course he will see the women empowerment also and the safety of the women. आप आए हैं वोटिंग करने के लिए? वोटिंग करने के लिए आए हैं, हमने तो अपना वोट दे दिया है, लेकिन हमारी दोनों बच्चियों का वोट जो है वो मिस से वो नहीं दिख रहा है, ये लोग बता भी नहीं पा रहे हैं कहाँ पे क्या है. अच्छा, पोलिंग बूथ नहीं समझ में. पोलिंग बूथ जो है पहले मुस्लिम स्कूल इंटर कॉलेज में था, उठा के यहाँ कर दिया है. अब 2 इधर कर दिया है, 2 उधर उठा कर भेज दिया. लोग परेशान वैसे ही घूमते फिरे. अच्छा, कैसे वोट कहाँ देना है क्या नहीं देना मालूम नहीं. आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? कोई है? आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी, कितनी महंगाई है, आदमी परेशान है अब सब करने के लिए, खाने के लिए परेशान. रोज सुबह उठता है सोचता है कैसे क्या होगा, महंगाई के लिए परेशान है सभी. सर, आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है? देखिए, इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके प्रेरणा से, योगी जी के नेतृत्व में अद्भुत कार्य किए गए हैं. पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया राज समाप्त कर दिया गया है. पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दिया जा रहा है, रोजगार के अनेक अवसर दिए गए. ऐसे में पूरे प्रदेश में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एक राय हैं, एक साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं. मार्जिन का सुधार होना है और इस पर आप लोग अन्य जगहों पर जाकर के चर्चा वाराणसी साउथ में सर आपको भी आपके कैंपेन के ड्यूरिंग थोड़ी माफी मांगनी पड़ी क्या? आपको नहीं लगता कि आपके लिए ये कॉन्टेस्ट डिफिकल्ट? मेरी बात समझे भैया जी, मेरी जनता है, मैं जनता ने कुछ काम दिया, मान लीजिए कि 10 काम दिए, सब कर दिया गया, कोई एक आध काम यही छूटा होगा तो मैंने कहा कि उसको आगे कर दिया जाए. और मोदी जी के कैंपेन से आपको कितना फायदा होगा? क्या उसी की वजह से बहुत ज्यादा पुश मिला है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, हम लोगों के पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, विश्व के सर्वमान्य नेता हैं. ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं जनता उनको हाथों हाथ लेती है. निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, मार्जिन पिछले बार से तिगुना रहेगा. आप आज इस ठेले में अपने परिवार के लोगों को लेके आए हैं. हमारे कहने का मतलब ये है साहब ने बाहर हमको टेम्पू पर ये जो बैटरी वाला है उस पर लेके आ रहे थे, तो हमने सोचा कि वहाँ सड़क पर उतार देंगे, तो इनके कमर में चोट लगी है और बाईं साइड में यहाँ भी लगी है, हाथ है,
ते वहाँ तक जाएगी कैसे? और आधार पर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हर साल जो है दुर्गा प्रसाद होते थे, तो मान लीजिए हो सकता है कि अब की भी हो जाए। दुर्गा जी, 8 बार से आप विधायक हैं, इस बार आपके पास क्या है जो आपने जनता को ऑफर किया है, जो आप जनता के सामने जो मुद्दे लेकर डाल रहे हैं? देखिए, जनता के पास जाइए, मुझसे मैं ऐसा आदमी हूँ, हर समाज के लिए मैंने काम किया है। ये कोई नहीं कर सकता कि दलित का काम नहीं किया। हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब मिल करके हम लोग मजबूती से काम करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कैंपेन किया, स्वतंत्र देव सिंह ने किया, उन्होंने कहा कि पिछली बार की जो हार थी आजमगढ़ में, इस बार उसको जीत में कन्वर्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट निकालने की कोशिश करेंगे। बहन जी की भी पार्टी पिछली बार दावेदार में थी, इस बार वो भी हर सीट पे टफ फाइट दे रही है, तो क्या लगता है बीजेपी और बसपा? बताइए, चुनाव में कहेंगे कि हमारी सीट नहीं निकल रही है, वो तो कहेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे ही। जब झूठ बोलना है तो कहेंगे हम विकास के नाम लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विकास किया, लखनऊ में जो विकास हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, स्टेडियम बना, मेट्रो बना, आपका रिवर फ्रंट बना, ये सब किसी ने बनवाया? आपका आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज बना, आपके छठियाओं चीनी में किसानों के लिए गन्ना पैदा करके वहाँ दें, अब पैसा पाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाना। 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी सीट यहाँ से जीत रहे हैं। All right. Those are the Samajwadi Party candidate in Azamgarh as well. And let me go across to my colleague Pranchu also on the Mayawati factor. Pranchu, how significant is the Mayawati factor going to be? The Mayawati vote share going to be? Because this time around the alliances are very different, isn't it? Samajwadi Party and the Congress were fighting together in 2017. This time around, the Congress is also in fray virtually, in all seats against the Samajwadi Party. There's the entry of AIMIM, but the BSP also continues to be a constant factor. Well, Shivani, if you start from Western Uttar Pradesh, and you will find that Mayawati has not been able to make that sort of assertion for which, she was actually pitching in. So more or less this election has been a bipolar contest between the BJP and the Samajwadi Party. In Western Uttar Pradesh, there was an increasing, I'll say an increasing observation about the fact that can Mayawati actually cause a split in the crucial minority vote bank, especially during phase 1 and phase 2, and most of the reading of the journalists who have visited on the ground, the political observers, had been that minority more or less en bloc has been, looking forward towards the Samajwadi Party. So in that sense, Mayawati factor was not probably not able to breach in the crucial minority vote bank, at least in Western Uttar Pradesh, where on many constituencies the minority vote bank actually matters. Now coming to the Eastern Uttar Pradesh quarters, yes, last time we saw that how out of 10 seats in Azamgarh, 5 were won by the Samajwadi Party, but 4 were still won by the BSP. Also in phase 6, for the polling on which took place on March 3rd, if you see that even 2017, despite BSP winning lesser number of seats, on many seats, it was actually the number 2 position, it was the key opponent to the Bharatiya Janata Party. So the point is that in 2017, at least we have seen BSP magic playing out well. They of course won far lesser number of seats than the Samajwadi Party, but if you see the vote percentage, their vote percentage in 2017 was higher than the Samajwadi Party. This time around, the minority card has not worked well for the BSP. Can it actually still be a glue for the MBCs and the Ati Pichras and the Ati Dalits? That needs to be seen. But the way this election has turned out to be a bipolar one, that clearly makes the possibilities very bleak. But yes, in phase 6 and phase 7 also today, the reports we are getting is that on several seats, BSP has been able to make it a triangular contest. Now if BSP is successful in doing the same, whose benefit it will be, whether it will be BJP's benefit or else the Samajwadi Party, but keeping the fact in mind that conversation, that exclusive comment which Home Minister made in that exclusive interview to our Editor-in-Chief Rahul Joshi, where Amit Shah has clearly said that he's of the belief that BSP is a factor. It has not only got the minorities vote bank, but also continues to get support from the other castes. I think that statement itself shows that BJP at least wants or has wanted that in this election BSP should contest well, and it should be seen as a strong force vis-a-vis the Samajwadi Party, because that will mean the split of the crucial anti-BJP vote. So has BSP done so? I think that will be clear only on March 10th when the counting takes place.
Yes, Ambikanand Sai, I want to come to you on this because this is going to be a make or break election for several players involved. For the Samajwadi Party, obviously, because out of power for 5 years, if they don't really show an improvement, it is going to be tough times ahead for the party. Possibly even people leaving and breakups, as we naturally see regional parties suffer if they are out of power for too long. Similarly for Mayawati, make or break election because she's been out of power for 10 years now, and if she can't retain her vote share, which is always considerable, around 18 to 20%, then that's going to be a problem. Make or break for O.P. Rajbhar, who split from the NDA or was thrown out from the NDA and joined the Samajwadi Party. Make or break for the likes of the defectors, former Yogi Adityanath cabinet ministers who are now with the Samajwadi Party. For Apna Dal, last phase 6, there was Fazil Nagar where SP Maurya was fighting from. There it was very much a triangular fight, and this time around Dara Singh Chauhan is fighting from the Gosi seat. So, a lot of careers are going to be made or broken. Very true, Shivani. It's a do or die battle for very many leaders. But I want to make here a very significant point. Number one, when you talk to one of the core voters of BJP, you get a different picture. And when you talk to a Samajwadi Party core voter, maybe from the Muslim community or Yadav, you get an entirely different picture. But elections are won and lost on the strength of the undecided floating voters. Now it remains to be seen who has been able to sway away these all important votes. And as I traveled across UP, I found that there are 2-3 issues that matter in these elections. Of course, law and order is one of them. But joblessness and price rise are making an impact on these elections in a huge way. And as far as your query on BSP is concerned, I particularly hold the view that if BSP is able to retain its core Dalit votes, that would be bad news for BJP. Had it split, most of it would have gone to the Bharatiya Janata Party thanks to the Labharti factor. Right. But if she is able to hold these Jatav votes, that's certainly bad news for BJP. Yes, Shivani. Yeah, no, you're absolutely right. That's the sense I get on the ground too. That actually if the voter was to shift from Mayawati, where would that voter go? Not to the Samajwadi Party, but to the BJP. And that is why the BJP is also keeping a very keen eye on the vote share of the for the Bahujan Samaj Party. Speaking of the BSP, let me bring back my colleague Siddhant as well. Siddhant, what's the kind of contest that the BSP is putting up in Azamgarh? Well, look, Shivani, adding on to what Pranshu was saying, that BJP wants BSP to give fight on each and every seat. Why? Because, BSP has a dedicated cadre. And in all possibility, if there will be a hung assembly, then BSP can join hands with Bharatiya Janata Party. Shivani, you speak to people from any community and Dalit community are silent. They still don't have a clarity, and that is a suspense for even people, those who are covering elections here on ground, because which way they will go, who they will vote, will form the government in Uttar Pradesh, and that much most of us have understood. And this is a reason that one of a senior BJP leader told me yesterday that Mayawati's number, Bahujan Samajwadi Party's numbers will be surprising and will be a shocker for everyone, because she has done very less campaigning this time. She barely took a few rallies before the pollings, but despite that she's going to perform, because her voters are still very much intact with her
and very much want her to be in power. So that is going to be something which will surprise each one of us. So at this point in time, going by the number of rallies she has taken or the kind of campaigning she has done, one may believe that she is not in fight. But many political pundits and people, those who have been covering election on ground, say that Mayawati is going to get good amount of seats and can even, in case of a hung assembly, can play a role of a kingmaker as well. Back to you. Okay. Interesting point you make. I'm getting some update as far as the Mao voting percentage is concerned. At 1 p.m. it is now 37%. So not too bad really. There are 5 more hours to go as far as the polling is concerned. But let me also get you some more reports from Varanasi now. My colleague Arun Singh is bringing us this report. उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है। इस वक्त मैं बनारस कैंट विधानसभा में हूं, जो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2017 में बनारस की सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कब्जा किया था। लेकिन इस बार चुनौती पेश कर रही है समाजवादी पार्टी का उसका गठबंधन, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से है वो, और साथ ही साथ बीजेपी के पक्ष में ये है कि अपना दल उनके साथ है। तो इस इलाके के पूरे जो कुर्मी वोटर हैं उस पर भी बीजेपी नजर लगाए हुए। इस वक्त मैं जिस बूथ पर हूँ यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा संख्या में लोग तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपने घरों से आए हैं मतदान का प्रयोग करने अपने, और यहाँ पर लाइन लंबी नहीं है। इस पूरे इलाके की जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि 54 सीटों पर जो मतदान आज हो रहा है उनमें से 36 सीटें 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के पास थी। तो सवाल यह है कि इन 54 सीटों में जोर किसने कितना लगाया है। सरकार चुनते वक्त मन में क्या ख्याल होता, कैसी सरकार रहे जो आपके लिए मुफीद हो, अच्छी हो? देखिए हम तो स्टूडेंट हैं, तो हम एज अ स्टूडेंट सोचेंगे कि मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। तो जैसे पिछले साल हमको स्कॉलरशिप मिला था मेरे पढ़ाई को लेकर के, तो मेरी हेल्प हुई थी। तो जो सरकार हमको मेरी हेल्प कर रही है तो हम उसी सरकार का हम भी सपोर्ट करेंगे। और छात्रा हैं, पहली बार की वोटर ये भी है। क्या नाम बेटा आपका? जी मेरा नाम अंशिका सचदेवा है। हम अपने सरकार का चुनाव कर रहे हैं, हमारे लीडर का चुनाव कर रहे हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, हम उनको आगे चल के रिप्रेजेंट करेंगे। पहली बार देने आया तो बहुत खुशी हो रही है कि हाँ इसमें कंट्रीब्यूट करें वोट देने में, मेरा भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इसमें। बहुत खुश है इसमें देने में हम लोग। अच्छा, क्या कुछ मुद्दों पर आजमगढ़ सदर और आजमगढ़ की और सीटें इस बार वोट कर रही हैं? दुर्भाग्य रहा कि जो हमारा प्रतिनिधि पिछले 40 वर्षों से यहाँ प्रतिनिधित्व किया इस विधानसभा सदर का, वह आजमगढ़ की कोतवाली की दुराचारी के लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम है। इस बार आजमगढ़ की जनता उसे बदलना चाहती, उस कलंक को मिटाना चाहती है। इसलिए पहले मतदान, इसके बाद जलपान के तहत हम सारे लोग निकलकर घर से और हमारे बूथ पर हमारा पहला वोट पड़ा है। यही कि हमारे प्रदेश का विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो, अपराधियों का सफाया हो। सर दिमाग में क्या दिए हैं अब देखिए, वो तो वक्त ही बताएगा। विकास के लिए दी हैं, जी महिला सर सुरक्षा के लिए जी महिला सुरक्षा के लिए, बेरोजगारी है सर, हम लोग भी ट्रेनिंग कर करके बैठे हैं, यही सब है। बेरोजगारी बच्चे सब बैठे हैं और क्या, इन लोग को नौकरी मिल जाए और क्या, विकास हो। हाँ यही तो। One interesting point that always comes in as far as UP elections is concerned is the beneficiary voter. Now, the beneficiary voter has been very strongly with the Narendra Modi government because a lot of the center schemes have benefited individuals over the last 7 to 8 years. Added to that are the beneficiaries from the state schemes as well. For example, when I visited Gorakhpur and nearby areas, in Varanasi and nearby areas, the Chief Minister Awas Yojana, the center and the state might of the free ration, free anaj, and there are several other schemes, even Ayushman Bharat, for example, that people talk about, Jan Aushadhi that is being celebrated, etc. So I want to go across to my colleague Pranshu as well, that beneficiary voter, the BJP believes that it is only going to get strengthened because there's been a strengthening of the schemes and the delivery on ground in Uttar Pradesh, which made its impact in 2017, 2019, and they believe that this will only get stronger in 2022. But the opposition will also harp on issues like price rise, issues like unemployment to cut through that narrative. Pranshu. Yes, Shivani, this particular aspect of the beneficiary class, now that has been something
on which BJP is clearly banking very strong. What BJP feels is that this particular beneficiary class, which cuts across all the castes and communities and is basically about the economically deprived section, is something that is going to remain loyal to them despite the so-called caste, annoyance against what they call the rule of the upper caste. And we all have been reporting that how brand Yogi, with all its positives, has probably also created a certain negative in the sense that the OBC caste, the MBCs and the Ati Pichras and the Ati Dalits, which have strongly endorsed BJP in 2017, were probably not left amused when an upper caste became a chief minister. But BJP, on the other hand, feels that all those damages which might have been done according to the opposition could actually be undone by this new beneficiary class. Now, this new beneficiary class, which we have been reporting about, also cuts through, also intersects with the Ati Pichras and the Ati Dalits of Uttar Pradesh. And therefore, the sense which people do get is that probably this class will continue to remain loyal, and even if there is an erosion, it will not be to an extent to hamper BJP's prospects beyond the point. Therefore, an analysis also says that even if BJP might be losing a certain number of seats, the damage may not be that extreme that BJP is voted out of power. Samajwadi Party, on the other hand, feels that, the erosion which is happening in the terms of lower caste is quite acute, and the so-called beneficiary class will not be able to hold that erosion which is happening. Now, whose observation is correct, whose analysis is correct? Is BJP's analysis about the beneficiary class still remaining strong with them? Is it correct? Then BJP clearly have, lesser reasons to be worried about. But if, according to the opposition's analysis, the erosion is beyond a certain degree, then clearly Samajwadi Party has a lot to be, satisfied about. How this class is acted upon is still not clear, because it is also the silent voter. We have, toured across various districts, and even you have visited. Often this particular class is not that vocal. So what it has done actually has been sealed in the EVMs and will now be out only on the March 10th. Absolutely. And just a reminder, taking the cue from Pranshu, that from 6 p.m. onwards, we'll be getting you an exclusive poll of polls coverage, continuous coverage, where we'll get you the numbers that are coming out as far as exit polls are concerned. So we'll get you that this evening. So stay with CNN News 18. But taking that comment further, let me also bring in Siddhant for one more comment. Siddhant, interestingly, when all of us were traveling, in the previous phases also, and in the later phases when I've been traveling, you've been traveling, I didn't really sense any anger as far as COVID phase was concerned. Mostly people say that COVID was managed fairly well, that yes, this was a tough period. In Uttar Pradesh though, given its condition in terms of population challenge and also primary healthcare facilities challenge, the Yogi government managed to do well. There was no large-scale anger or anything as far as COVID is concerned. Did you get the same feeling? You were speaking to some voters earlier, even if they were BJP supporters. What is the sense that you got otherwise? And did the free anaj that people got during COVID period make them satisfied? Is that question to me, Shivani? Yes, Siddhant, go ahead. Oh, yes, absolutely, Shivani, absolutely. Even the same I have observed, that people are not talking about COVID mismanagement. People are not talking about the narrative that opposition parties tried building, last year in the month of April or at the time of first lockdown. People are really not associating themselves with that particular issue. What they're talking about is that we were given free ration. Yogi ji was present in almost all the districts when COVID was going on. He was curing, and he was, making sure that administration efficiently provide ration to the families and and the other things that are needed. So definitely BJP has been successful in not letting opposition in cash COVID mismanagement issue in the state of Uttar Pradesh. There Yogi Adityanath's government is successful, because I have not seen COVID mismanagement an issue anywhere. You remember, Shivani, let's take our viewers back 1 year back, when opposition was daily making statements alleging Yogi government of the mismanagement, and those dead bodies on Ganga Ghats, and, the entire investigation, everything happened. But if we talk about last 3 months, when election season was going on, there was no talk of that.
and their BJP government is really successful. Instead of that, they have also in a way has been successful in making a narrative that we have given free ration to everyone in during COVID times. We have through Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi 2000 रुपए हर किसी के अकाउंट में गए और उससे बहुत ज्यादा जैसे लोगों को फायदा हुआ. Shivani, I was speaking to someone, and they were Bharatiya Janata Party is confident also. I think Pranshu was also highlighting the same point, that when it comes to OBCs and Dalits, BJP is confident that their blocks will also be transferred to Bharatiya Janata Party only because they are the they are the beneficiaries of these schemes, both the central government and the state government scheme, whether it's free ration or whether it is Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. So that is something which people are realizing, and BJP is successful in making the it Chief Minister Awas Yojana in making people realize is something, that Siddhant, that I saw that people really talked about throughout the Uttar Pradesh campaign, and not surprisingly, Yogi Adityanath continues to hammer the numbers of the houses built, the low-income houses built, and there also the beneficiaries are quite large. So, Ambikanand Sahai, I want to take a comment from you as well. In 2017, it was said that Ujjwala, the scheme of the centre government that was pushed vociferously in Uttar Pradesh first, obviously with an eye to the elections coming up, was a winning factor for the BJP. This time around, the sense I got from the ground is that if the BJP does well, free Anaj during COVID period, now running for 2 years, possibly to be extended for the lowest income groups. 15 crore people in Uttar Pradesh, out of its population of 22 crore plus, have received free ration. Do you believe this could be the game changer? You are right. This can be the game changer, provided Mayawati is not able to hold her core votes, because most of these Labharthis are from Dalit and extremely poor classes. So that's why I always say Mayawati is the great factor of these elections. But on the whole, I too believe that Labharthi is the strongest point with the Bharatiya Janata Party, and I won't be surprised if they do well. Okay. I request all of you to stay with us, Pranshu, Siddhant and Ambikanand Sahai. We're going to continue to get you more voices from in and around Varanasi, voters from across the 9 districts, and more analysis of what really matters as far as these elections are concerned. But there is no overscoring the importance of the UP elections. The battle of the states this time around, 5 states going to polls, but the mother of all state elections is always Uttar Pradesh, paving the road to the general elections in 2024. A reminder once again that our exit poll coverage starts at 5:30 p.m. this evening. So we will get you all the voices that matter and all the numbers that matter, not just from Uttar Pradesh, but from across the 5 seats that have polled this election season. On that note, let me also go across this exclusive conversation that Yogi Adityanath had with Network 18. He talked about the aim of the BJP, the expectations of the BJP, and the issue of terrorism. हमारे ग्रुप एडिटर राहुल जोशी ने एक इंटरव्यू किया अमित शाह के साथ. उन्होंने बोला मायावती की ताकत है और उनको मुसलमान का वोट मिलेगा. और मायावती ने भी बोला कि हाँ, बात सही है, हमारी तो ताकत है और हमें मुसलमानों का नहीं, हमें दलित का वोट भी मिलेगा. तो क्या हम समझे कि इस चुनाव के बाद जो अगस्त में राखी आएगी, उसमें योगी आदित्यनाथ भी मायावती से राखी बंधवाएंगे? देखिए, हम लोग पूरे प्रदेश की बहनों से राखी बंधवाते हैं जी, और उसमें पूरे प्रदेश की बहनों के से हमें वही स्नेह भी मिलता है. 2019 का लोकसभा का चुनाव 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई थी. सेकंड पोल बीएसपी ने किया था. मीडिया के सारे आंकलन उस समय भी ध्वस्त हुए थे और कमोवेश चुनाव उधर ही जा चुका है. ये बड़ी बात आप कह रहे हैं. आप कह रहे हैं कि कमोवेश चुनाव उधर ही जा चुका है, यानी आपको बीएसपी नंबर 2 दिखती है मैं प्रदेश में? मैं ये नहीं कह रहा हूं. चुनाव का रुझान वही है. मैं बीजेपी के पक्ष में जानता हूं, बीजेपी ये है, लेकिन 20% में जो बंटवारा और बंटवारे की स्थिति क्या है वही आप सपा को मेन कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को. मैंने कहा ना, 80% सीटें बीजेपी जीत रही, 20% में
तो 20 सपा बसपा कांग्रेस में 20% में सपा को आप ऊपर मानते हैं, बसपा को ऊपर मानते हैं? वो तो उन लोगों के जनाधार और उन लोगों के उस पर आधार क्या है? मेरा आकलन कुछ भी नहीं, मेरा आकलन तो यही है कि 80% सीटों के साथ बीजेपी आगे चल रही है। जी, मुख्तार अंसारी के बेटे का बयान भी आया, अब्बास अंसारी। उसने बोला कि उत्तर प्रदेश के मऊ में उन्होंने कहा, एक जनसभा को संबोधित करते हुए, मैं अखिलेश यादव को कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने दे, पहले पूरा हिसाब किताब होगा और उसके बाद इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। देखिए, जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन जनता उनको इस लायक नहीं रखेगी। पर ये तो हिसाब किताब पूरा करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जनता इस लायक जब छोड़ेगी नहीं कि वो हिसाब किताब करने लायक बनेंगे, उस लायक बनाएगी नहीं उनको। जब सपा से सवाल पूछा गया कि किस हिसाब किताब की बात कर रहे थे, तो सपा नेताओं ने बोला, देखिए ये बात कर रहे थे कि किसी ने अगर करप्शन किया होगा तो उसका हिसाब किताब होगा, कोई और हिसाब किताब नहीं है। ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी की संवेदना गरीब के प्रति नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है। उनकी संवेदना अन्नदाता किसानों के प्रति भी नहीं है। उनकी संवेदना इन पेशेवर माफियाओं के प्रति है, अपराधियों के प्रति है और आतंकवादियों के प्रति है। इसलिए जनता उनको दूर तक देखना नहीं चाहती है। देखिए, ये पूरी जो चुनाव था ये जिन्ना से शुरू हुआ, उसके बाद हमने गर्मी पे आता हुआ देखा, उसके बाद हमने साइकिल और आतंकवाद पर आता हुआ देखा। अब ये कह दिया गया है कि समाजवादी पार्टी, जेपी नड्डा ने एक साक्षात्कार दिया मुझे, उसमें उन्होंने बोला कि मैं बोलूंगा अखिलेश यादव जो है वो आतंकवादियों की को मदद करते हैं। इस बात में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो बीजेपी आतंकवादी कैसे बता सकती है समाजवादी पार्टी? इसमें कोई संदेह है क्या? एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब क्या है? आप बेशर्मी के साथ आतंकवादियों का सपोर्ट करें क्या? इसलिए अपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया है? मुझे एक बात बताइए, 2003-04 से लेकर के 2007-08 तक जितनी आतंकी घटनाएं प्रदेश में हुई, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुई थी? एक दूसरा, 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और श्री अखिलेश यादव जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, क्या ये सच नहीं कि इन्होंने उन सभी आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, काशी के संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था, लखनऊ, अयोध्या और काशी के कचहरियों पर हमला किया था, गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट किए थे, सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। उन सभी आतंकियों के मुकदमों को इन्होंने वापस लेने का कुत्सित प्रयास नहीं किया था। और क्या ये सच नहीं कि अहमदाबाद बम ब्लास्ट के लिए जो आतंकी दोषी था, जिसे फांसी की सजा हुई है, आजमगढ़ का वह आतंकी जिसका बाप समाजवादी पार्टी का सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, अखिलेश यादव के साथ उनकी फोटो है। आज तक अखिलेश जी ने कभी उसका खंडन तो नहीं किया। इन तीनों मामलों में खंडन क्यों नहीं किया? वो कह रहे हैं हम तो विकास की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए समस्या यही है कि जब हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे और राष्ट्र नायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे थे, तब ये चिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। जब हम विकास की बात करते हैं तब ये जातिवाद की बात करते हैं। जब हम लोक कल्याण की बात करते हैं तब ये लोग पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता जान रही है, देख रही है। अच्छा, प्रियंका गांधी ने भी बोला कि अब ये आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जिन्ना की बात कर रहे हैं, ये मुद्दों की बात नहीं कर पाते, इसलिए घबराती है भारतीय जनता पार्टी। आतंकवाद भी एक मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो कहते, उन्होंने बोला विकास की सार्थकता बगैर सुरक्षा के हो ही नहीं सकती। और अगर आज आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है और मुक्त कंठ से कर रही है जी, तो उसके पीछे सुरक्षा का यही मुद्दा है। उसे विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर। एक सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि हम छठे चरण में बैठे हुए हैं, विपक्ष का पूरा विपक्ष इंतजार कर रहा है। हालांकि ओवैसी ने तो कहा था जब मोदी हिमालय चले जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ पे चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाने आएगा। लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है कि योगी मठ में चले जाएंगे, वो आपके मठ में वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं तो मठ में वैसे भी रहता हूं
लखनऊ की सत्ता का संचालन भी मठ के माध्यम से मठ की तरह ही करता हूं, जिसमें पारदर्शिता हो, प्रतिबद्धता हो, ईमानदारी हो और लोक कल्याण का अंतःकरण से एक भाव भी हो। यही मठ की शिक्षा है और वही काम हम मठ में क्यों भेजना चाहते हैं सब लोग? देखिए, अपनी हार को ये स्वीकार कर चुके हैं, उनकी हार को, उनकी हताशा को ये प्रदर्शित करता है। अखिलेश तो कहते हैं मैंने टिकट भी खरीद लिया है योगी जी के लिए, इसलिए कह रहे ना विदेश भागने का टिकट अपना बुक करा लिया। उन्होंने बोला कि मैंने योगी जी के लिए खरीद लिया मठ, मुझे टिकट खरीदने में तो गोरखपुर में आता जाता रहता जी, क्योंकि योगी जी आपने बड़े सारे मिथक तोड़े पिछले 5 साल के अंदर। एक उसमें से मिथक था कि नोएडा, मैं हर मुख्यमंत्री कहता था मैं नोएडा जाऊंगा तो हार जाऊंगा, लेकिन आप तो नोएडा चले गए और एक बार ही नहीं कई बार चले गए। तो अब कुछ घबराहट हो रही है कि अब नोएडा चला गया कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ? लोक कल्याण के पथ पर हम लोग निकले हैं। हमने जीवन का एक ही संकल्प बनाया है जो कभी रंतिदेव ने तय किया था, और वह संकल्प है जो हमें लोक कल्याण के मार्ग पर सदैव प्रेरित करता है। यानी हमारी एक ही इच्छा है और वह इच्छा होती है जो प्रदेश के 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का और उनके जीवन में खुशहाली लाने का। एक बताइए, जब आप नोएडा जा रहे थे और एक मिथक था, मतलब 21वीं सदी में एक मिथक था कि अगर नोएडा जाएंगे तो दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बन पाएंगे, तो आप जा रहे थे तो कुछ ख्याल आया मन के अंदर? कोई ख्याल नहीं आया। हम तो मैंने कहा ना, एक ही संकल्प लेके बढ़े हैं। काम ये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम। एक ही कामना है कि लोक कल्याण का पथ अगर चुना है तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, और प्राणी मात्र का कल्याण का मार्ग मनुष्य के कल्याण के माध्यम से होता है, जिसमें सज्जनों का संरक्षण और दुष्टों का और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को कानून के दायरे में लाकर के सजा दिलाना, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवानों के लिए और समाज के विभिन्न तबके के लिए जीवन के अवसर आगे बढ़ाने का उपाय करना, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार यही सब कर रही है। Elections and CNN News 18 are synonymous. Election studio, unlike any other. Scale, sophistication, and superiority. Full screen that leaves you spellbound. Presentation that keeps you hooked. If it's election verdict, CNN News 18 is your destination. Mark your date. Results with News 18. Thanks a lot for staying with us here exclusively on our digital platform. We are getting you live coverage and rolling continuous coverage of the final phase, the 7th phase of UP elections. And with that, month-long election process in 5 states is coming to an end. I'm Shivani Gupta. I'm joining you live from Varanasi, where we've been surveying certain polling booths and the mood amongst the voters, the issues that matter to the people in the public on ground. Here in Varanasi, remember, when the campaigning, the last stretch of the campaigning was going on, the Prime Minister campaigned for nearly 3 days, and he camped here once again as he did in 2017. And in the constituencies that fall under the Prime Minister's Lok Sabha constituency, the BJP of course hopes to sweep as the NDA did last time around. The BJP also hopes to sweep as the NDA did last time around in the Varanasi district 8 seats. And they hope that the Yogi Modi factor, but particularly the Modi factor, will come to their aid as far as the final phase is concerned across the districts. The 9 districts and 54 seats going to polls, which include Chandauli, Mao, Azamgarh, Sonbhadra and more. Whether that will be the case or not remains to be seen. But here I spoke in Varanasi to women voters and how much the issue of women's safety matters. And it has mattered and has been one of the dominant issues throughout the UP elections. Listen in. So आपने वोट कर लिया? एकदम
वोट कर लिया हमने। खुश है? बहुत मोदी खुश। जी को जिता दिया। अच्छा, यहाँ पे मोदी मोदी जी क्या बहुत नारे हो रहे हैं, बट मैं आपसे आशा ये करूंगी कि आप पार्टी का नाम ना लें, जो आपको मुद्दे लगते हैं वो बात बताएं। मुद्दा तो देखिए, यहाँ सबसे पहला मुद्दा तो विकास का है। हाँ। इतना विकास हुआ है कि कभी नहीं हुआ, तो कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत ही अच्छा हुआ है, हमारी लेडीज के लिए अच्छा हुआ है, और हमारे जितने भी है देश के लिए बहुत बहुत अच्छा हुआ है। All beaming, all the women here are beaming, खुश लग रहे हैं बहुत। हाँ, नहीं बहुत खुश है हम लोग के। बनारस में इतना ज्यादा विकास हुआ तो सभी जगह है, पर प्रैक्टिकल में जहाँ हूँ वहाँ की बता रही हूँ। चाहे मंदिर हो, रोड हो, लेडीजों को निकलना हो, कुछ भी, हर तरह से हम लोग सुरक्षा महसूस करते हैं। रास्ते जाम से बच गए, लाइट से बच गए, मतलब हर सुविधा ही सुविधा है। बहुत कुछ मिला। देखिए, सबसे पहली बात है काशी कॉरिडोर, फिर हमारी सड़कें, हमारी बिजली, यहाँ का गुंडा राज, यहाँ का मतलब हर चीज अच्छी हुई है। जो बहुत संकरी गलियां थी, उसमें जो बायर्स थे, जंगल था पूरा, जो जाल था पूरा बायर्स का, वो कम हुआ है, सब खत्म हो गया। गंदगी थोड़ी कम हुई है। बहुत गंदगी तो है ही नहीं अब। रात को भी जाइए 3 बजे तो अभी सफाइयाँ हो रही हैं। अब तो लोग रात में निकल जाते हैं, 1 बजे 2 बजे निकल जाते हैं चाय पीने के बहाने। पहले नहीं जाते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पहले तो सुरक्षा की वजह से। अच्छा। पहले तो बच्चों को अकेले आदमी छोड़ता नहीं था। हाँ। कि नहीं, बच्चे स्कूल गए, स्कूल से घर आए, चलो। हाँ। कोई जाता था लेने, कोई लेके आता था। अब तो एकदम बिंदास बच्चे स्कूटी उठाते हैं, अपना निकल जाते हैं। हाँ। क्या है, रात के 12 बजे हो, किसी का कोई डर नहीं है, और कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की। और योगी जी हनुमान है। अच्छा। So there you heard from some of the women voters. They were obviously very, very impressed with the work that Narendra Modi and his presence as the Prime Minister in Varanasi has managed to do. So Pranshu and Siddhant continue to be with us. Pranshu, I want to come to you with this because, you know, there is the Modi-Yogi factor. As we were discussing earlier, one woman said that, you know, Modi Ram hai, Yogi Hanuman hai. So that divinity factor comes in, that Hindu faith comes in. And here in Kashi, of course, Kashi corridor, the redevelopment of the Kashi Dham comes in. They talked about development just generally in Varanasi, the cleaning up of the streets, the reduction in the wires overhead, just, you know, some of the work that has happened. And the BJP is banking on that as well. Not just the issue of women's security alone, but the fact that they've managed to kind of bring some resurgence to this very ancient town of Kashi. That is what they're playing on as well. They say that Vishwas bhi or Vikas bhi saath chalega as far as faith and development are concerned. Yes. Yes, Shivani, you know, this Varanasi's facelift or the transformation which Varanasi has seen, that is of course a big factor as far as Varanasi's constituencies are concerned. But if you talk about what has transpired since 2017, that is last election to this election, 2017 it was only the Modi factor or the brand Modi, that was, you know, the BJP's aid or the BJP's big tool asset as far as the elections were concerned. This election is different because here are two narratives which are working simultaneously and both are an edge for the Bharatiya Janata Party. Brand Modi along with Brand Yogi. So that is a new development. Now Brand Modi, we have often described that how Brand Modi means a lot of charisma for the BJP. Mr. Modi not just comes in as a, you know, a Vikas Purush. He is also the larger personification of the entire Hindutva identity in crucial parts of eastern Uttar Pradesh. His backward caste identity that has also been put to a maximum use by the Bharatiya Janata Party. Brand Yogi also comes in with its own sets of advantages, but also certain sets of, you know, disadvantages. Advantages in terms of the so-called law and order improvement which BJP claims about, that has been under the Yogi Adityanath's government. The second big point has been that unlike the predecessors, Yogi's own image has been that of a hard-working and an honest chief minister. So there is no taint of corruption as far as Yogi Adityanath in the individual capacity is concerned. That is the one big point on which BJP is banking. But if we talk about the negatives, see in 2017, we have often reported at how BJP has given a strong projection to its MBC leadership. Likes of Keshav Prasad Maurya, who was brought in as the president of the party, and when Yogi Adityanath became the chief minister, it was no hidden secret at how Keshav Maurya was also a key aspirant, and he was quite, you know, quite vocal in it, demanding for the top job. And ever on since that point in time, there has always been this debate that whether the OBCs in Uttar Pradesh were feeling a bit cheated because someone from the upper caste was brought in as a chief minister. So that, I think, is a challenge which BJP needs to you know, navigate through as far as the battle of 2022 is concerned. And that's the reason
why we have seen a larger reliance on brand Modi when it comes to in eastern Uttar Pradesh. You see western Uttar Pradesh where Yogi Adityanath was more in action. He was the one who was making all sort of news by talking about bulldozer, by talking about calming down or bringing that garmi to an end as far as the districts of Muzaffarnagar or Shamli was concerned. But in eastern Uttar Pradesh, it is more about the brand Modi phenomena. So is brand Modi phenomena going to work for BJP in the very same way it has worked in 2017 when it comes to eastern Uttar Pradesh, or it is going to be slightly impacted by the brand Yogi phenomena? That needs to be seen. But having said that, BJP is confident that both the Modi factor as well as the Yogi factor are the two-pronged strategies or the two strong reasons why people of Uttar Pradesh will continue to bank or support Bharatiya Janata Party, despite the fact that there might have been some erosions in terms of the caste base, there might have been certain anti-incumbency. The other important thing is that all across Uttar Pradesh, you spoke to Neelkanth Tiwari and you very rightly asked him that why were you forced to go and, do some sort of an apology from the people at large. I was in Ayodhya. In Ayodhya again, there was a lot of resentment against the sitting BJP MLA, but people continue to seem to have faith in Modi and Yogi. So I think the larger story for the BJP is that despite anti-incumbency against certain, elected legislators, they still probably have a lot of faith as far as Yogi and Modi is concerned. So is that going to reign supreme? I think there lies the real story, and if that factor is still working, then BJP clearly will feel a lot comfortable, despite the fact that many MLAs have a lot of anti-incumbency on the personal level. Let me take that to our election expert Ajit K. Jha, who's also joining us. Ajit K. Jha, do you believe that the BJP has managed to kind of cut anti-incumbency against MLAs either by changing relevant number of tickets and relevant number of candidates, or will they be able to do so with the brand Yogi and Modi image that Pranshu is talking about? Do you think anti-incumbency against local MLAs could be a factor that could worry the BJP, or have they handled it well enough? See, let me give you, Pranshu gave you a quick report from the ground. Let me give you a long-term answer. What I feel Purvanchal is basically the socialist belt of Uttar Pradesh. This used to be the base of Lohia. This used to be the base of all the socialist leaders in the past. In fact, Sonbhadra, the southernmost district, used to be a sort of, for a long time, it used to be influenced by Naxalites, by the left parties, because there were trade unions there. It's an industrial zone. Now, what happened is Yogi, when he came and he took over the mutt in Gorakhnath, he had done extraordinary work in transforming the political profile of the region. You see a kind of a realignment in this region over the years, moving away from this socialist left wing. Remember, this is the poorest zone. Other than Bundelkhand, Purvanchal is the poorest zone of Uttar Pradesh. So Yogi ji had done extraordinary work in transforming that entire area, and quite a bit of it had shifted towards, the Sangh Parivar, especially during Ayodhya movement. You find the OBCs and Dalits of this region participated in a major way there. But if you look at 2017, out of all the 7 phases which went to polls, this phase is the one where the BJP had not done as well as, let's say, in the previous phases. BJP had, of course, won about, I think, 29 seats. But at the same time, out of 54, 29 is not as high as in some of the other areas where it had almost maxed most of the seats. Samajwadi Party had won only 11 here in 2017. So there was a change, but I still feel that this area is also the stronghold of SP and BSP historically. Now, what this time we will test whether the anti-incumbency against the sitting MLAs, many of them who could not be changed last moment, will that be offset by the Modi and the Yogi factor? Now, Modi ji's last 2-3 days, his sort of road show in Varanasi
was very, very impressive. But as some observers pointed out, one did not see a kind of buoyancy there. In fact, some of the, if you look at Akhilesh's meetings, for example, one not only saw enormous gatherings, but a sort of, hurdrangabaji. A lot of people pushing and shoving and passion. Modi ji's meetings were spectacular, but more restrained. Now, it's difficult to get from the ground exactly what's going on. That's the big test here. Whether Modi ji's influence, and as I said, historically, even Yogi ji's influence in this area, has it cut that anti-incumbency against the BJP MLAs is what is going to be tested today. Interesting point you make, Ajit Jha. While there may be some issues in some, constituencies for some local MLAs, as I talked to Neelkant Tiwari, he has faced some heat, possibly in some other areas as well. But interestingly, you touched about not just the Modi-Yogi image factor, their image is one of doers, right? Their image is one of the people who can get stuff done, who can get work done, who work 20 hours a day. The BJP plays on that image a lot. But you touched upon how Purvanchal has been devoid of development under successive governments. That's the other big plank, right? So even if there was some anger, etc., do you think the larger projects, the Purvanchal Expressway, the Kashi Dham corridor, the Gorakhpur Varanasi Expressway, I traveled on that. From Gorakhpur to Varanasi, all of these have come up. People talk to me about how roads have come up to villages in some of the rural parts of these constituencies and districts. The big development push in Bundelkhand here, for example, there are medical colleges, AIIMS, big expressways, etc. that the BJP is talking about. Will that also help the larger projects, even if there are some issues on the ground as far as specific constituencies is concerned? Are the larger development projects enough to convince voters? Well, let me put it this way. Expenditure on visible development issues like roads, like as you pointed out, airports, for example, Kushinagar, Gorakhpur, all that has been fairly sort of transformed. Even Varanasi, Ayodhya, this entire area, the big cities, the big religious hubs has been fairly transformed in the last 5 years, yes. But also remember, there are poorer areas, for example, Chandauli, Ghazipur, Bhadohi, Jaunpur, Mirzapur, Mao. These are really, really backward parts of UP. This is what Paul Brass used to say. This is the rice belt of UP. Permanently underwater for most of the time. There used to be all kinds of horrible disease here in the past. I mean, parts of this area is even poorer than Bihar. So, of course, Yogi ji has made a concerted effort. But do remember, this is also the first time an election is being held, given during a pandemic, right? A lot of people's relatives have died, a lot of unemployment. This is the place where the highest migration takes place, out-migration from Uttar Pradesh. Not since today, but since the 18th, 19th century. Entire sort of urban male adults, they move to urban areas, sometimes Lucknow, other parts of the state, but mostly outside. In fact, even abroad at times. So this is a really, really poor zone of Uttar Pradesh. Now, to what extent had the reverse migration affected it? To what extent, if at all, the farmers' movement impacted upon it? All that are the X factors. Unemployment, inflation. Inflation has been really high of late recently, right? Given the fact that the war-like situation is going on. In fact, inflation and unemployment are the issues, Ajit Jha, that we hear people talk about the most. More than anything else, and in fact we were talking about this earlier before you joined us, people don't really talk about COVID anymore. In fact, not at all. People don't talk about anything they suffered during COVID. If anything, what people talk about is they got free ration during COVID and the government took care of them. So I don't think COVID has turned out to be a factor, but unemployment and price rise is definitely something that
those wanting a change, for example, do talk about. I do request you to stay with me. Let me also quickly play out this excerpt from my colleague Anand Narasimhan's report when he spoke to several people in Varanasi doing a chai pe charcha with them. कैसा लग रहा है आपको? इतने सारे चरण हुए, 5 चरण 6 चरण, अभी 7वें चरण में वोट होगा। आजाद जी, क्या लग रहा है आपकी बात? जी अब रोचक मोड़ पे पूर्वांचल खड़ा है सर जी। और आप लोग क्षेत्र में हैं, पूर्वांचल का मतदाता विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं दुखी इसलिए है मात्र कि रोजी रोजगार नौकरी के सवाल पर पूर्वांचल के जिलों का युवा कराह रहा है। वो इस तलाश में है कि हमें रोजगार मिले, हमें नौकरी मिले। विषय है कि मोदी योगी तो उपयोगी है, लेकिन उनके 312 विधायकों में से जितने लोगों को टिकट दिया है 403 में से, उसमें से कितने उपयोगी हैं? ये चुनाव तो ये मोदी योगी के नाम पर ले जाएंगे। जनता मन बना के बैठी है, अराजकता किसी को पसंद नहीं है, तो एक बड़ी पब्लिक जो है खामोश होकर बैठी हुई है, उसी का वोट डिसाइडिंग होगा। जो हमारे लेडीज है या इनको ये पॉइंट ज्यादा सूट कर रहा है। तो शहरों में तो ये बहुत ही है, अराजकता वाले पॉइंट बीजेपी बेस पड़ेगी। और कहते हैं हम लोग ना, वन मैन मेक्स एन आर्मी। अकेले मोदी जी आर्मी बना रहे हैं, लेकिन sometimes you have to relieve his shoulder. उनके शोल्डर को थोड़ा सा आराम देना। 312 सीटें पिछली बार थी, 403 विधानसभा सीटों में से हर असेंबली सीट में जाके प्रचार करवाइएगा मोदी जी से, योगी जी से। ये तो असंभव है। हर विधानसभा में उन लोगों को जाना ये संभव नहीं है। जहाँ तक प्रयास है पार्टी की और सरकार की, लगभग हर जिलों में सभा कराने की है, और हो भी रहा है। कप्तान और उप कप्तान के नाम पर कितनी बार वोट खींचिएगा? कभी तो यहाँ टीम को भी परफॉर्म करना होगा। लोकल ये बात मैंने सब जगह देखी है आरपी सिंह जी। ऐसा क्या है कि ऐसे लोगों को टिकट बांटा गया जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनको आना नहीं चाहिए? देखिए, चुनाव का पैटर्न बदल चुका है। 21st सेंचुरी में जो इंडियन पॉलिटिक्स थी, उसका पैटर्न पहले था कि कैंडिडेट देख के वोट देना, लेकिन अब जो है लीडर ओरिएंटेड वोट हो गया है। तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जाति से उठकर, अपने समुदाय से उठकर लोग वोट करेंगे? एकदम करेंगे, विकास के नाम पर करेंगे। राजभर के स्वामी प्रसाद मौर्य के इन सब के टूट के जाने से यहाँ पूर्वांचल में फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा विश्वनाथ की है ना, इसका रीजन है जातिवाद से हट के वोट करने का रीजन ये है कि सबसे बड़ी चीज है कि जनता देखती है कि उसने क्या पाया, नेता ने क्या पाया ये नहीं देखती, वो देखती है कि हमने क्या पाया और जो दिया है मोदी ने। All right. Will Vikas be the trump card? Will it overrule and overshadow everything else? This election, UP election, will indeed be an answer to that. The last 3 times, 2014, 2017, 2019, results have been surprising even for election pundits. But the BJP believes that it's not really a surprise for them. They have worked on the ground, and that's why the results come for them. And the larger Hindu vote consolidation, the beneficiary voter, the woman voter plays a huge role for them. Will that be the case this time around too? Because there's an added factor of Yogi Adityanath, or will that actually end up polarizing the vote even further? Will the Muslims vote en bloc for the Samajwadi Party, or will that vote be split a little bit? This time around, the Congress is not with the Samajwadi Party. It's fighting separately. It may not be in contention, but will it break away some of the votes or not? There's AI-MIM in factor in some places. But let me go across to my colleague Siddhant also, who's joining us from Azamgarh. We're talking about Vikas. Siddhant, was Vikas the overarching theme, or are there other issues like price rise and unemployment that dominate the discourse in Azamgarh as well? Well, one thing I can say, Shivani, at this point in time, after covering so many seats, after covering at least more than 4 to 5 phases, that this government is not highly unpopular government. There may be some level of anti-incumbency or dissatisfaction amongst the people after the COVID mismanagement or some other schemes which couldn't satisfy them.
but this government is not unpopular the way last government in Uttar Pradesh was. Let me speak to some of the voter and I'll take that question to him. ये बताइए कि क्या आप 5 सालों में सरकार के काम से संतुष्ट हैं? क्या ये जो विकास की बात हो रही है, ये जो बातें हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि कुछ और बेहतर हो सकता है? हम बिल्कुल पिछली सरकार के सारे विकास के कार्यों से संतुष्ट हैं, क्योंकि इसके पहले जो सरकारें थी उसमें अगर 80 वैकेंसी आती थी तो 72 वैकेंसी किसी एक विशेष बिरादरी की होती थी, विशेष बिरादरी। आज वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो बढ़िया है उसके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। किसी विशेष अच्छा, आपको ये दिक्कत थी कि किसी एक बिरादरी को नौकरी जा रही है, लेकिन एक दलील ये भी है कि नौकरियां भाई नहीं इस सरकार में, ये भी भाई बहुत लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस कहती है हम 11 लाख नौकरियां देंगे, कोई पार्टी कह रही है हम 20 लाख नौकरियां देंगे। अभी पिछली सरकार में, इसी सरकार में, योगी सरकार में 69,000 प्राइमरी की वैकेंसियां हुई, दरोगा की वैकेंसियां हुई और बहुत सारी भर्ती नहीं भी खोली ना सरकार ने, तो जितने की आवश्यकता होती। आप बताइए आपका क्या मत है कि जो कोविड का जो दौर था उसमें काफी जैसे कहते हैं सरकार को क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि गंगा के किनारे बॉडीज मिली, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन जो कोविड मिसमैनेजमेंट था वो इशू नहीं बन पाया जमीन पे। क्या कारण था? क्या लोगों ने एक तरीके से माफ कर दिया या ये मान लिया कि ये प्राकृतिक आपदा थी और कोई भी मुख्यमंत्री होता, कोई भी प्रधानमंत्री होता तो इससे निपटना मुश्किल था, इसलिए इनको माफ कर दो? क्या आपकी क्या इसमें अंडरस्टैंडिंग है? ये देखिए, ये एक वैश्विक महामारी है। वैश्विक महामारी, तो अधिकतर वोटरों ने यही मान लिया है कि ये एक वैश्विक महामारी थी। जी हाँ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए विश्व के जो सबसे विकसित देश थे वो बहुत ज्यादा लाचार थे। हमारे यहाँ तो बहुत कम मौतें हुई हैं, अगर विश्व की तुलना में करी जाए तो हमारे यहाँ भी कहती है कि जो मौतें हुई वो आंकड़ों में नहीं आई है। ये तो विपक्ष जो है हमेशा जो है सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाता रहता है, वो विपक्ष का काम है। लेकिन विकास के मामले में बहुत सारे काम ऐसे इस सरकार में हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए थे। शिवानी, दिस वाज द पॉइंट वी वर डिस्कसिंग, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टेकन इट दिस वे दैट इट वाज एक प्राकृतिक आपदा थी जिसकी वजह से सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। आप बताइए सर, आपको कुछ बोलना है? हाँ, बोलना है। देखिए, सपा की सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा था सुरक्षा, जो कि सपा सरकार ने पूरा नहीं किया। हम उसके खुद गुनाह है, क्योंकि सपा सरकार के हम एक बार पैसा लेके जा रहे थे इसी चौक से और उसके वजह से हमको गोली मार दी गई। लेकिन आपको गोली मारी गई थी? हमें गोली खुद मारी गई है और बाद में हम कोतवाली में रपट हुई, जो भी हुआ कोतवाल सुना ही नहीं हमारी बात। कौन मुख्यमंत्री था तब? उसमें अखिलेश यादव थे, तो सुना नहीं आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई और केस ऐसे ही रद्द हो गया। अब लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ? हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बढ़िया अगर कोई सरकार है योगी जी सरकार है। लेकिन उसके बाद हाथरस जैसे कांड होते हैं या विकास दुबे जैसे कांड होते हैं। 2-4 कांड 25 करोड़ जनसंख्या में अगर 2-4 कांड हो जाते हैं वो अपवाद है, लेकिन पूरा हाल देखा जाए तो सबसे बढ़िया सरकार यही है। सबसे बढ़िया सरकार यही है। अच्छा, तो रोजगार भी मिला है, कोविड मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदा के ऊपर बोलना चाहता हूँ सर कि जैसे कि पिछले 70 सालों का अगर आप रिकॉर्ड निकाल लें तो आप देखेंगे कि केवल 12 मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, और आज की डेट में 28 मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे तो अभी भी बन रहे हैं सर, खुले बन रहे हैं और जिनका उद्घाटन किया जा चुका है, जिनमें उद्घाटन के बाद भी शुरू नहीं हुए, जिनमें एडमिशन हो गए, बहुत सारे शुरू नहीं हुए। सरकार में मात्र 1400 सीटों पर एडमिशन हुआ था और पिछली सरकार ये जो हमारी योगी जी की सरकार थी इसमें 4900 सीटों पे एडमिशन लिया गया है। इवन एम्स को छोड़कर 2 एम्स स्टार्ट हुए हैं। सबसे बड़ी बात आजमगढ़ के लिए यह है कि पिछली सरकार में विश्वविद्यालय का 63 दिन तक मांग की गई थी, लेकिन किसी ने इस पर अपनी निगाहें नहीं डाली, जबकि यहाँ के वर्तमान विधायक ने बोला था कि विश्वविद्यालय की आवश्यकता ही नहीं है आजमगढ़ को। और योगी जी की सरकार में अमित शाह जी को ने खुद शिलान्यास किया है और लगभग काम शुरू हो चुका है। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करेंगे। सदर सीट के लोग तो काफी संतुष्ट लग रहे हैं योगी सरकार से। 2 एक्सप्रेसवे मिला हमको, एक गोरखपुर एक्सप्रेसवे मिला, एक पूर्वांचल एक्सप्रेस। लेकिन आप जो वाराणसी और आजमगढ़ को सड़क कनेक्ट करती वो देखी आपने, उसकी हालत क्या है? हाँ, ये तो अच्छा, ये टेंडर समाजवादी के ओके। सो देयर यू सी शिवानी, दिस पर्टिकुलर सीट वेयर आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम, most of them are supporting Bharatiya Janata Party. This is the Sadar urban seat of Azamgarh.
But let me tell this to our viewers, the scenario is not the same on each and every seat. As I have been mentioning, that Azamgarh seats are mainly dominated by MY factor and the other caste factor. So a win for BJP is not that easy. One seat is urban seat. This is Sadar seat where I'm reporting from, and the one other seat is where BJP can win. Other than that, most of the seats, MY factor plays a role, and that is the reason that Akhilesh Yadav manages to retain those seats even in Lok Sabha and even in Vidhan Sabha elections as well. Back to you, Shivani. Let me take that to our expert Ajit K. Jha also. Ajit K. Jha, you know, there's an interesting contest here. One side says, especially the opposition says, that unemployment is a major issue, and generally public do talk about it as well. But on the other side, the public also talks about how that when there were bhartis in the previous Sarkar, they were based or reserved for a certain class of people. So even if there are, let's say, less opportunities now, at least they are fair and transparent. That's the narrative and the contest, isn't it? And that's an interesting one, because employment, job creation and unemployment, they're all big issues in this election. Yes, absolutely. In fact, I think unemployment is the largest issue during this election. Number two would be inflation. Let me also point out that when we look at psephology all around the world, there is something called the pocketbook model of voting, which is that if the voters feel that in the last 5 years their condition has improved, they vote for the incumbent. If they feel that their condition has become worse, they vote against the incumbent. So now some families, you know, have a very bad time, let's say, with unemployment, especially if they are very poor, if they come from migrant worker families. Reverse migration has taken place, no jobs at all. Now, obviously, that will be the angry anti-incumbent voters. Whereas those voters who have managed to get small contracts during development and things of that sort, they tend to be, you know, pro more sort of income towards incumbency. Now, Azamgarh itself, as rightly pointed out by our correspondent, in 2012, out of 10 seats in Azamgarh, the Samajwadi Party had won 9. During 2017, when the saffron wave was sweeping UP, I think the Samajwadi Party only managed to win 5 of them, but 5 out of 10 is still very high. So the point is, true, Azamgarh district itself is basically the pocket borrow of Samajwadi Party. It's really the Muslim Yadav concentration of voters that are very high, except maybe for the urban area. But moving away from Azamgarh, all around the area, I think BJP still has an advantage, given the fact that both Yogi Adityanath and Prime Minister Modi has done campaign on Friday, for example, the road show across Varanasi, Varanasi North, Varanasi South, Varanasi Central, by Prime Minister Modi really helped, you know, that kind of bit of anti-incumbency that was going on in 1 or 2 constituencies seem to have been neutralized partly. But at the same time, this is the real fight between the Hindutva forces on the one hand and the so-called Mandal forces represented by, you know, Samajwadi Party. Also, Bahujan Samaj Party is not as weak as we seem to think. It has a fairly strong hold in some of the areas in this area, and that might actually end up benefiting the BJP. Why? Because the Muslim voters will be divided on the whole issue of either Samajwadi Party or Bahujan Samaj Party. Advantage in this division will end up going to the BJP. So on the whole... Yes, and as we were talking about earlier, there are a lot of smaller parties for whom the election results are going to be very key. The Apna Dal, the SBSP, Mayawati vote share, what happens to it? What happens to the minority vote share? Will it be en bloc with Samajwadi Party or split? Who will be able to, and whether the BJP is going to be able to retain its larger Hindu consolidated vote? Let me also bring in my colleague Maria Shakil, who's joining us, political editor. Last phase, Maria, 7th phase, 54 seats. But in Purvanchal, the issues, you know, the dominant issues are still the same, which is law and order, women's security, development, an element of faith here because Varanasi is going to polls, an added calculus of caste. And that is making it a very interesting battle. Yes, and that's right.
And Shivani, let's not discount the fact that in the opposition side, Akhilesh Yadav has tried to bring in this rainbow coalition to counter the coalition that has worked for the BJP in 2017 and 2019. The fact that Rajbhar is a factor, we cannot discount that. And for all those who may be saying that the BJP will be able to perhaps better its tally from 2017, I'm not too sure if that will be correct, for a simple reason, Shivani, because 2017 was a wave election, and the only belt where the BJP did not do well was Purvanchal, particularly the 7th phase, where the BJP in this 56 seats that are going to polls, their strike rate was roughly around 60%, while in other phases they have done much better. So now coming to the issues and the caste arithmetic at play here. Again, this may not be the correct assessment to say that BJP only has done Hindutva. BJP has done as much social engineering, getting the caste arithmetic right, as much as any other political party, the regional parties of UP, that is the Samajwadi Party and the BSP. For the BJP to have Apna Dal and Nishat Party on board, and that has yielded dividends in 2017 and 2019. The exit of Om Prakash Rajbhar had upset the BJP's calculus. That is what sources in the party had been telling me, that this was a factor that worked for them in 2017, also in 2019, and soon after the 2019 we saw Om Prakash Rajbhar exiting his alliance with the BJP and forging an alliance with the Samajwadi Party. Now looking at, can this be seen as Kamandal versus Mandal election? No, not really. BJP has made this cocktail of issues in which, as much as there is the issue of Hindutva factor, but that is not the dominant narrative in these elections. In this election, it is about the Garib Gurba. The fact that the ration scheme of Prime Minister Narendra Modi, that there is this ration that is given by Yogi Adityanath every 15 days, that is working for the BJP on ground. And if they were to repeat the performance, may not repeat the performance perhaps of 2017, if they happen to win this election, then one factor that will be playing out clearly is in favor of BJP would be the ration scheme and multiple schemes of the government of India. Ujjwala was something that we heard during 2017 and 2019, which led to the emergence of the Modi voter, Shivani. But in this time around, Ujjwala wasn't heard as much. This was about the house scheme, Pradhan Mantri Awas Yojana, and Rozgar and I would say ration in particular. And as you have been saying rightly, the issue of law and order has been playing as well. But I would say that the new aspect of law and order is a changed sociological understanding of law and order. This is more to do with what projection has been made by Yogi Adityanath, that he is the bulldozer Baba. So when we say that law and order will be seen on those contexts about the action that has been taken by Yogi Adityanath against the bungs or those leaders who are seen from the minority community, particularly of the Samajwadi Party. So again, as I've been saying, Shivani, not fair to read this election just as Kamandal versus Mandal, because I don't see it is being so narrowly viewed. Second, this is about law and order. This election is also about ration, but this is also about rural UP speaking about ration and urban UP talking about largely the sashan or law and order. Yes. Well, law and order indeed. When I was speaking to Yogi Adityanath in the last phase in Gorakhpur, I talked to him about how law and order isn't just about, of course, the crime numbers, etc. It is also about the condition overall of the populace. And he talked about how under our government there has been no riot for 5 years, when in the previous term there were as many as 700 riots. He has been hammering the point that there were months of curfews in several sensitive areas. None of that was witnessed. So people on the ground do talk about that. Connected with law and order is women's security, massive issue across Uttar Pradesh, and every woman talks about it. And then, of course, is the bulldozer that you talked about. And speaking of that bulldozer, the government owns up to it. Yogi Adityanath has been owning up to it. He's been giving out warnings that bulldozer ready hai, March 10 के बाद फिर से चलेंगे bulldozer development और bulldozer साथ साथ चलेगा.
कोई भी बाहुबली दबंगई यहाँ नहीं चलेगा. In fact, I traveled to Mao, where the bulldozer is indeed the big issue, because this is the traditional seat of Mukhtar Ansari, who won last from the BSP ticket, this time not fighting, not given ticket. His son Abbas Ansari is fighting. Take a look at this story from Mao. All through the UP campaign, Yogi Adityanath has been hammering home the point of how tough his government has been, bulldozing Mafia Raj in the state of Uttar Pradesh that has been ruling the roost under previous governments. And that message rings especially loud in Mao, the seat of 5-time sitting MLA Mukhtar Ansari. This time though, his son Abbas Ansari is fighting on his father's seat, although from the SP-BSBP combined, but fighting on the stick symbol, not the cycle. An international level shooter, Abbas had previously lost the nearby Ghosi seat assembly polls in 2017 to BJP's Phagu Singh Chauhan. This time though, he believes he's in the pole position despite his father's image. यहाँ पर हम लोग हमेशा अकेले लड़े हैं जनता की ताकत के साथ, और इस बार तो अखिलेश भैया और ओम प्रकाश चाचा का भी आशीर्वाद प्राप्त है, तो इस बार तो कोई लड़ाई ही नहीं है. मैं आपको इस बात के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस हूँ. मैं आपको बता सकता हूँ कि जितना वोट बीजेपी यहाँ पाएगी उससे ज़्यादा से इलेक्शन जीतूंगा. 27% ऐसे बीजेपी ने कैंडिडेट्स इस चुनाव में उतारे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं. उनके ऊपर कोई सवाल नहीं. हमारे ऊपर जो भी मुकदमे हैं, कम से कम हम कोर्ट का ट्रायल तो फेस करते हैं. हम उन बेशर्मों में से तो नहीं है कि अपनी कलम से अपने मुकदमे हटा के और खुद को शरीफ घोषित कर ले, संत घोषित कर ले. मैं इस देश की, हमारा परिवार इस देश के लोकतंत्र और संविधान का इज्जत करता है, और उसके साथ साथ हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं. न्यायपालिका ने आज तक, बताइए, किसी भी केस में विधायक जी को कन्विक्शन किया हो, मेरे पिता को? मेरा सवाल ये था कि आपके पिताजी ने क्या कहा, कुछ तो बातचीत हुई होगी. अब आप लड़ रहे हैं उनकी सीट से, सबसे बड़ी उनकी लेगेसी के लिए तो लड़ रहे हैं एक तरह से. सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं उनकी लेगेसी की नहीं, मैं जनता की आवाज बनने के लिए लड़ रहा हूँ. जनता ने पिछले 25 सालों से उनको आवाज बताया. आप एक नाम बता दीजिए इस पूरे भारतवर्ष में, एक व्यक्ति कि 5 बार कोई प्रधान भी बना हो और वो अपने प्रधानी के क्षेत्र में ना रहता और प्रधान बना हो, मगर जनता ने बनाया है ना. ये तो सबूत है ना. क्या कहा उन्होंने? कैसे? उन्होंने कहा जाओ, हमेशा लोगों की खिदमत की है, क्योंकि 10 साल से मैं यहाँ हूँ. मैंने ही लोगों का काम देखा है, चीजें देखी. सिर्फ कहने के लिए मेरे पिता विधायक हैं, उनकी साइन चलती थी, काम तो सारा मैंने किया है. तो हर आदमी इस बात को जानता है. Currently lodged in Banda jail, Mukhtar had won the Mao seat on the BSP ticket in 2017. Against his son this time, BSP has fielded its state president Bhim Rajbhar. But in contest is also a man who's been fighting the mafia don for very personal reasons. Ashok Singh, the BJP candidate, is a non-politician fighting his very first election. His brother was allegedly murdered by Ansari's men in 2009 and the case is ongoing. He says Ansari clan's time is up. गलतफहमी पाले हुए हैं तो गलतफहमी का कोई इलाज होता नहीं है. पड़ला उनका भारी रहता था, उसका कारण था, वही बताएंगे ना. 5 बार से मैं विधायक रहा हूँ, 5 बार से विधायक माफिया पसंद सरकारों की वजह से होते रहे हैं, जो 5 बार से विधायक रहे हैं. यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री है. यहाँ माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर भी चलेगा और विकास भी, दोनों एक साथ चलते हैं. तो जो विकास के साथ है वो विकास के साथ है, और जो माफियागिरी करेगा उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा. और ये जो बोल रहे हैं जितनी बातें ना, सब फ्रस्ट्रेशन में है. क्यों मैदान छोड़कर भग गए मुख्तार अंसारी? लड़ना चाहिए था ना. अभी ऐसी उनकी कोई उम्र नहीं हुई कि चुनाव लड़ने लायक नहीं है. मैदान छोड़कर भग गए. मेरी लड़ाई है जिसे मैं लड़ रहा हूँ, और मैं पहले अकेले था. जब से मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य बना हूँ, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका मैं सदस्य हूँ. और मुख्तार अंसारी की हमारी लड़ाई व्यक्तिगत अपनी जगह, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ, उनका प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी से. तो यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेज है, न कि मेरी और मुख्तार अंसारी की. He is hoping to ride on the bulldozer mania of the BJP that has become a symbol of the Yogi government itself. Supporters seen bringing bulldozers to Yogi's rally in the area. माफिया माद यहाँ पे बड़ा रहेगा या बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की सरकार का बड़ा रहेगा? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, पूज्य योगी जी की सरकार में किसी माफिया की औकात नहीं है कि वो खड़ा हो सके, किसी को परेशान कर सके. आज आप देखी होंगी जितने विद्यालय कॉलेज होते थे,
बच्चियां पढ़ने जाती थी, सोहदे अगल बगल खड़े रहते थे, तमाम तरह की फब्तियां कसते थे, बुरा बर्ताव होता था। आज कहीं घूमकर आप देख सकती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसी सौदे की, किसी माफिया की औकात नहीं है कि किसी बहन बेटी के साथ गलत नजर उठाकर देख सके। In Mao District though, the BSP factor is also very crucial. Across its 4 seats, traditionally it is considered to be a BJP versus BSP fight. Will Mayawati be able to hold on to that vote share? And will that truly hurt the Samajwadi Party and Om Prakash Rajbhar combined? That's really the big question to watch out for. With camera person Narendra Singh in Mao, Shivani Gupta, CNN News 18. Well, this tough image of Yogi Adityanath, which he really owns up and has become his USP, also ends up antagonizing a fair section of the public. And that's a real factor. Let me bring in our UP Bureau Chief, Pranshu Mishra, who continues to be with us. Pranshu, you know, this also ties in with the 80 versus 20 narrative of Yogi Adityanath, isn't it? That the 20% who believe in arajakta, in chaos, in anarchy, in mafiawad, in Gundaraj, they may not be with the BJP and the Yogi government, but the rest 80% who believe in law and order, women's security, nationalism, and nation first, they will be with them. So this whole mafia raj, bulldozer, women's security, law and order all ties up in that 80-20 narrative. Yes, Shivani, you know, and it's a very complicated aspect. See, law and order is more about perception. We have covered successive governments in Uttar Pradesh, and in every government, law and order has been a challenge. So if you talk about Yogi Adityanath's claim, opposition will, you know, recount you several instances. You talk about that women's safety has increased, you will get an example of what is happening now, how the then BJP MLA Kuldeep Singh Sengar was, you know, accused in a case of rape of a girl and a murder of a father. He is presently convicted and has been sacked from the Bharatiya Janata Party. Don't forget what happened in Hathras, how a Dalit girl was raped and then subsequently murdered, and her body also, you know, and her dead body was also given a hasty cremation. How Priyanka Gandhi has made up a big issue out of that particular event. So you talk about the law and order issue, the women's safety, opposition has its own cases to, you know, remind you of. You talk about the larger law and order question, opposition will always remind you of how one Manish Gupta, the businessman, was allegedly beaten to death by men, policemen itself in Gorakhpur. They will remind you of the Nepal executive Vivek Tiwari, who was shot dead by cops in Lucknow. They will remind you of the the Vikas Dubey case where 9 policemen were murdered in cold blood. So I think the law and order is always a challenge in a big state like Uttar Pradesh, the state which is so much defined by caste fault lines and religious fault lines. But the larger issue is that how can a government create a perception? And I think there is where Yogi Adityanath has been able to create a better perception as compared to, say, Akhilesh Yadav or Mulayam Singh or Mayawati when they were chief minister. The other important thing is that, you know, when you talk about the 80% versus the 20% debate, this law and order situation has also been seen as being, you know, targeting people from particular community. So mostly you talk to opposition, they'll say that Mukhtar Ansari, yes, he was a mafia, he has been made a showcase of action against the organized crime. But what about other mafias like Dhananjay Singh or Sushil Singh? Akhilesh Yadav, remember, has once famously tweeted saying that here is a Bahubali, someone who has a 50,000 rewards on his head, is playing football in Jaunpur. So Dhananjay Singh is again also a candidate on the JDU ticket from one of the seats constituencies in Jaunpur. So the point here is that Yogi Adityanath's hard policy on law and order and action against mafia has also resulted probably in consolidation of the Yadavs and the Muslims for the Samajwadi Party. So that is also the one, you know, the negative aspect of the high-handedness approach of Yogi Adityanath. That is what we get a sense on the ground. Yes, law and order might be an appealing issue for many women, many people at large, common people, traders, and they feel that general lawlessness on the streets, that has clearly ebbed down. But when it comes to the action against organized mafia, the charge is that that action has been against selective faces, people from a certain caste and community, and not against all. So that remains one important charge also against the Yogi government. Yes, that's precisely why I said that, you know, this entire law and order thing and the 80 versus 20 debate ends up antagonizing a whole section of the public as well. The BJP or the Yogi Adityanath government or the personality of Yogi Adityanath himself is that, you know,
they don't really care, and they've been quite vocal about this as well. But will that help the Samajwadi Party and especially in the minority vote consolidation remains to be seen. But let me bring in Ajit K. Jha once again. And the other aspect that we haven't discussed, and possibly that is telling, is the Congress. My colleague Pranshu talked about Priyanka Gandhi, raising the issue of Hathras. She's been very, very active in Uttar Pradesh on ground for a long time. In fact, the Congress was saying that, where is the opposition? Where is the Samajwadi Party? We are the ones who are actually the real opposition because we are the ones who are on ground. The Samajwadi Party isn't on ground as well. They've just come out during elections and for campaigning. That's a charge that Akhilesh Yadav faces especially. So where do you see the Congress? Can they improve at all, or are they going to be subsumed in this BJP versus SP fight? I think two answers. In the short term, Congress will be, as you rightly pointed out, undercut in this election because it is largely, it seems like a bipolar election. If there is a tripolar section to this election, it's the Bahujan Samaj Party. The Congress, I think, will get edged out in this election short term. But having said that, I must admit that Priyanka Gandhi's campaign itself has touched on the right chords everywhere, especially on the women's issue, ladki hai, lad sakte hai, all those campaigns have created a buzz around all across the state. In fact, if you travel across the state, you see Priyanka Gandhi's pictures, all besides the road, as much as you see those of Yogi Adityanath and other leaders. I think she has sort of, her voice, there has been a sort of a resonance from the ground. I think it will have an impact maybe in 2024, but certainly not in this election. It may not convert into seats, certainly, even if it might give them a little bit of bounce on the votes in one or two seats. But largely this remains a bipolar fight between the Mandal versus the Kamandal. And if there is a third factor which will undercut the Mandal, it will be the Bahujan Samaj Party under Mayawati. That's what I feel looking at the macro level sociology of this state. Yes, and the results of these elections are going to be very crucial for the Congress party, isn't it? Because, if they don't manage to do well, but especially if there is a resurgence for the Samajwadi Party, then they again go down in the hierarchy of opposition parties or other parties in Uttar Pradesh. And even though the Congress's larger game plan may be to build up to 2024, these results are going to be very crucial because bad results, poor results here will not leave much for them to build upon for 2024. I do thank Ajit K. Jha for joining us, and let's also listen into Yogi Adityanath once again from his exclusive conversation to Network 18. 6 चरण का चुनाव लगभग समाप्त हो रहा है और 7वां चरण है और हम इस समय आपकी नगरी में कहूं गोरखपुर में मौजूद है, जहां पर आप महंत बने, संत बने, जहां से आपने सांसद बने और यहीं से आप फिर मुख्यमंत्री भी बने। तो 6 चरणों के चुनाव के बाद मन में क्या आ रहा है योगी? देखिए, प्रदेश में जनता जनार्दन का जो अपार स्नेह प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, लोक कल्याण यानी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के मिला है जी। 6 चरणों के जो रुझान हैं वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को अपना प्राप्त करेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। नतीजे अब आएंगे अब से कुछ दिनों में या फिर कहें तो कुछ घंटे अगर हम कहें तो उसके बाद नतीजे आने शुरू हो गए, तो क्या दिल में क्या महसूस होता है कि इस समय आप व्यूअर हमारा ये जरूर जानना चाहता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, हमारे मन में वही है जो जनता के दिल में है जी। मुझे सबसे अच्छा ये लगा पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान कि जनता जनार्दन का अपार स्नेह और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक उस व्यक्ति तक, पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है,
जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी उसके अनुरूप जो क्रियान्वयन हुआ है जी, उसका लाभ बहुत स्पष्ट दिखाई दिया है। और लोगों ने जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का ट्रेंड 2014 से चला है कि परिवारवाद को खारिज करना है, जातिवाद, मत और मजहबवाद की राजनीति को खारिज करना है, राजनीति का एजेंडा गरीब तय करेगा, नौजवान तय करेगा, महिलाएं तय करेंगी, अन्नदाता किसान तय करेगा। और जिस भी सरकार ने उनके हितों के लिए कार्य किया है, जिन पार्टियों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, वे लोग उसके साथ खड़े होंगे। और भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने इस पर कार्य किया है और उनको जनता जनार्दन को का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जब हम अभी इस समय रामगढ़ ताल पर खड़े हैं और आप पीछे मुड़ के देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं पीछे मुड़कर, तो क्या आपको ध्यान में आता है? क्योंकि इस समय भोर हो रही है यानी शाम हो रही है, शाम हो रही है और कहीं ना कहीं ये वो वक्त होता है जिसके अंदर आदमी कभी कभार अपनी पुरानी बातों को भी याद करता है। देखिए, ये जो रामगढ़ ताल है ना जी, एक प्राकृतिक झील है। हाँ, मैंने सुना पानी अपने आप ही इसमें आता है। 1400 एकड़ में फैला हुआ है जी। कभी ये क्षेत्र गोरखपुर का सबसे कुख्यात क्षेत्र माना जाता था, अपराध का गढ़ माना जाता था जी, अराजक गतिविधियों का गढ़ माना जाता था। आपने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम देखा है। आज यह पर्यटकों की आकर्षण का एक केंद्र बन गया है। 4 लेन की कनेक्टिविटी हो गई है, ये बोटिंग प्लेटफॉर्म है। लोग परिवार के साथ आकर के इस पूरे झील में बोटिंग करते हैं। आप भी देख रहे होंगे बहुत सारे लोग इसमें बोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। और लाइटिंग आप देख रहे होंगे पूरे यहाँ पर आने जी, के लिए जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो उसका प्रमाण भी है। यह एक पर्यटन के यानी परिवार के साथ लोग आकर के अपने खाली समय में यहाँ पर गुजार सकते हैं, यही नहीं है, सैकड़ों और हजारों लोगों के आजीविका का भी एक माध्यम बना है ये झील। तो स्वाभाविक रूप से ये झील अब गोरखपुर के पर्यटन का और आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बना है और इसका लाभ जो है गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। जी, अब बतौर मुख्यमंत्री आपके 5 साल लगभग पूरे हो रहे हैं। एक ऐसा कार्य जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए और अगली बारी आएंगे तो जरूर कर देंगे। देखिए, हम लोगों ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है और कोई कसक रखते भी नहीं है। हमने 2017 में लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था जी। एक एक जो मुद्दे थे, एक एक संकल्प को पूरा किया। संकल्प वही जिसका विकल्प नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने पूरा किया है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हमने लोक कल्याण पत्र संकल्प पत्र पहले ही जारी कर दिया है। एक एक मुद्दे पर सरकार फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, तो कुछ तो होगा योगी जी जो आपने कहा ना, जी जीरो टॉलरेंस हमने काम किया है, उसी की सेकंड पार्ट कंटिन्यूटी आगे बढ़ेगी। जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम है, सुरक्षा के बेहतर कार्यक्रम हुए हैं, सेकंड पार्ट इसी का बुलडोजर भी चलता रहेगा। ये सभी चीजें उसी का बुलडोजर भी चलता रहेगा एकदम आगे, सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक योगी जी, मेरा जो एक सवाल था वो मैं जरूर आपसे पूछना चाहता हूं और ये देशवासी भी इस पर जरूर सुनना चाहेंगे। पुराने वक्त को आप याद करते हैं, महंत से सांसद बने, सांसद से फिर आप दोबारा सांसद बने, कई बार आप सांसद बने, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने। तो पुराने दौर को आप याद करते हैं? क्यों नहीं, मैं पुराने दौर से अलग नहीं हूं। देखिए, सन्यास का हमारा पहला धर्म होता है सेवा। हम लोग जब सन्यास लेते हैं तो सन्यासी के लिए पहले से ही अपने लिए सेवा का एक क्षेत्र चुनना होता है। हमने भी अपने लिए चुना। बाद में मुझे सार्वजनिक जीवन में आने के लिए कहा गया, मैं यहां से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। गोरखपुर की जनता ने मुझे बार बार चुनाव जिताया
और लेकिन सेवा का वह संकल्प हमारा आज भी, उससे हम दूर नहीं हुए हैं। हम लगातार सेवा के उन कार्यों के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। और जो एक योगी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में सेवा का हमारा सीमित क्षेत्र था, उसके दायरे को आज बढ़ाया गया, काफी बड़े दायरे को आज बढ़ा है वह, और आज पूरे प्रदेश के अंदर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने एक इंटरव्यू में आपकी जब बहन का जिक्र हो रहा था तो आप थोड़ा इमोशनल हो गए। आपने प्रदेश को ही अपना परिवार बना लिया। आपकी माताजी की मैं तस्वीर देख रहा था और हमने उत्तराखंड में अपना रिपोर्टर भी भेजा। हमने देखा आपका घर कैसा है, आपका परिवार कैसा है। आपका एक भाई तो बस चलाता है और सिस्टर आपकी जो है वो चाय की दुकान चलाती है, प्रसाद का काम करती है। क्या आपको कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि आप इतने बड़े पद पे पहुंच गए और परिवार के लिए आप कुछ करना चाहते हो? देखिए, कभी मन में आता है? हमें परिवारवाद की राजनीति से उठना पड़ेगा। हर व्यक्ति को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना पड़ेगा, एक। दूसरा, हम लोग अगर इस पद पर हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के 135 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक बने हैं जी। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जी 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हितों के लिए कार्य कर रहा हूं। आप याद करिए ना कि मैं एक परिवार में होता तो एक बहन के हित के लिए कार्य करता, लेकिन आज लाखों बहनों के हितों में के लिए कार्य करने के लिए मुझे अवसर मिल रहा है। उनके जीवन में परिवर्तन लाने का, उनके जीवन में खुशहाली लाने का, स्वावलंबन लाने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि स्वावलंबन के मार्ग पर चल कर के जी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ा देना ये बड़ा कार्य है और हम लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। योगी, अब बैठ के चर्चा करते हैं, आइए। तो बिल्कुल अंतिम चरण का चुनाव बचा है, तो कुछ ऐसे सवाल जो कि इस समय जिनके जवाब सब जानना चाहेंगे। एक कैंपेन के अंदर मैंने इसको नोट किया, बाकी लोगों ने भी इसको नोट किया होगा। कैंपेन से पहले तो जब कैंपेन चल रहा था शुरुआती के 2-3 दौर में तो 80-20 हो रहा था, और उसके बाद हमने देखा कि आपकी सभाओं में बुलडोजर भी आने लग गए और आपने एक सभा करने जा रहे थे, आपने हेलीकॉप्टर में थे या किसी फ्लाइट में थे, तो आपने जिक्र किया, बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो। आपने बोला देखो मेरी सभा में मुस्कुराते हुए बुलडोजर भी है। देखिए, चुनाव आज भी 80-20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी जी, 20% में बंटवारा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब याद करिए 2017 में बीजेपी कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। 2019 में कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। तो ये ट्रेंड बना हुआ है और यही ट्रेंड आगे भी चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद, जातिवाद, माफियावाद की राजनीति को भुक्तभोगी है, उसको तिलांजलि दे चुकी है। एक तो ये। दूसरा, बुलडोजर उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक भी है। एक्सप्रेस हाईवे, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, ये सब उसके माध्यम से बनती हैं, लेकिन माफिया के लिए खौफ का प्रतीक भी है। लेकिन आपका नाम क्या दे दिया गया इस चुनाव के अंदर? आपको बुलडोजर बाबा कहने लगे। ये पब्लिक का प्यार है, जनता जनार्दन का स्नेह है, और वह इस रूप में अगर जानना चाहती है तो हमने भी इसको उसी रूप में अप्रिशिएट किया। योगी जी, अगर सपोज नंबर नहीं मिलता है, मतलब वो 202 की फिगर नहीं आती है, तो फिर क्या होगा? अगर मगर की बात ही नहीं है जी। मैंने तो 80 बनाम 20 का चुनाव बताया है आपको, पहले दिन से कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 80% सीटें पाएगी, विपक्ष में 20 के लिए बंटवारा होगा। विपक्ष में 20 के लिए बंटवारा होगा, लेकिन अखिलेश यादव ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि 400 सीटें उनकी आएंगी, और फिर उसके बाद आपका भी मैंने साक्षात्कार किया। एक और इंटरेस्टिंग है कि आपने चुनाव की शुरुआत भी हमारे इंटरव्यू के साथ करी थी, और चुनाव का समापन अब हो रहा है तो वो भी न्यूज 18 के इंटरव्यू के साथ ही हो रहा है। उसके बीच में आपने कई सारे साक्षात्कार दिए और आपने 325 का आंकड़ा दिया था। तो चुनाव प्रचार के दौरान इतने सारे चरणों के बीच में आपके आंकड़े में आप अपना आंकड़ा क्या देना चाहते हैं? क्या अब भी आपको लगता है 325?
मैंने कहा ना 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जब 325 जीतेगी तभी 80% सीटें जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ चुकी है। पहले चरण के चुनाव से लेकर के अब तक छठे चरण तक आपने देखा होगा, और सातवें चरण का रुझान भी अगर आप देखेंगे, ये टोटल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आधी आबादी का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। मैंने फिर कहा ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, उसी मिथक को तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कल्याण सिंह बने मुख्यमंत्री और वो वापस नहीं आ पाए, उसके बाद हमने मुलायम सिंह यादव को देखा, मायावती को देखा, अखिलेश यादव को देखा, वो मुख्यमंत्री बने लेकिन मेजॉरिटी से सरकारें बनी, पिछली 2 सरकारें तो 3 सरकारें तो मेजॉरिटी से बनी, वो वापस नहीं आ पाए। तो मैं वो पूछना चाहता हूँ, आपका प्लान बी क्या होगा अगर नंबर नहीं आ पाते हैं? मैंने क्या कहा, की घड़ी है, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। Elections and CNN News 18 are synonymous. Election studio, unlike any other. Scale, sophistication, and superiority. Full screen that leaves you spellbound. Presentation that keeps you hooked. If it's election verdict, CNN News 18 is your destination. Mark your date. Results with News 18. Good afternoon, everyone. Thanks a lot for staying with us on our digital exclusive live stream of UP elections. The 7th and the final phase of UP polls underway today. The polling percentages that are coming from on ground till 1 p.m. are pretty healthy, anywhere in the range of 35 to 37% from the 9 districts and 54 seats that are going to polls today. With this, of course, the big 1 month long election process and election season, Battle of the States 2022 will culminate and results will be on March 10. You can continue to be with CNN News 18 all through the day today and on March 10, of course. This evening, 5:30 p.m. onwards, we'll get you an exclusive continuous coverage of the exit polls, the poll of polls, all the numbers that you need to know from across the 5 seats that have gone to polls this season. And of course, today the seats that are going to polls will be extremely important. This is the Purvanchal area where both the pitch of development by the BJP versus the caste calculations of not just the BJP but other parties, especially the SP and its alliances with the SB-SP, etc. will come into play. The Apna Dal Nishad factor will be known after the results come out from this phase, and who exactly will come out on top in the larger Uttar Pradesh battle depends a lot on the final phase as well. 54 seats, as I mentioned, going to polls today. Let me also bring in my colleague from News18.com, Aman Sharma, now joining us. Aman, you have also traveled extensively across Uttar Pradesh. If I just leave aside phase 7 for a minute, largely speaking, across Uttar Pradesh, what are the things going in the BJP's favor and what are the things going in the opposition's favor? See, I think both the camps are very confident that they are winning the UP elections. You speak to BJP leaders, they are very confident that they are crossing 300 seats. You speak to the Samajwadi Party camp, they are also very confident that they are crossing 300 seats. So obviously, we'll know on March 10 which camp's confidence is misplaced and which camp's confidence is on the mark. But I think the issues in these elections which have dominated the discourse from the BJP side have clearly been strong law and order, Mr. Yogi and Mr. Modi's image, improving the law and order situation, removing the Mafia Raj, the entire Bulldozer campaign, and also the free rations. I think these have been 3 or 4 major planks on which BJP has fought this election. On the ground, if you go in villages, you will find especially women very appreciative of the free rations as well as the improved law and order situation in UP. But on the other hand, if you speak to supporters of the Samajwadi Party, voters who vote for the Samajwadi Party, they say that it is unemployment and the stray cattle problem which has really dominated the discourse in this election for them, because they feel that the unemployment issue, especially if you go in villages, you'll find youth roaming aimlessly without jobs, walking up to media teams and saying कि हमारा पक्ष भी लिया जाए, कि jobs नहीं है. For the last 2 to 3 years, they say recruitments have not opened up. So
So that is the major grouse that people have with the BJP government, that the jobs is an issue. Also, the stray cattle in villages is an issue because illegal slaughter of cattle was stopped under the Yogi government. So there is a huge problem of stray cattle and cattle destroying fields. You know, this is the problem with the farmers are facing, and this is an issue on which even the Prime Minister had to address in one rally to say that we will resolve this issue after March 10th. So I think these are the major issues on both sides. Also, this cyclic nature of UP politics, where for the last 3 to 4 decades, a government always changes. You know, be it the strongest of chief ministers from Mr. Kalyan Singh to Mr. Rajnath Singh to Mulayam Singh Yadav to Mayawati to Akhilesh Yadav, nobody has been able to repeat a government in UP. This is something that Yogi Adityanath is trying to change. This is a big challenge for the BJP to bring back their government in UP despite this cyclic nature of UP politics. And the BJP is saying that in fact the politics of the state has changed under Mr. Modi, and the old politics of caste no longer has that resonance. But of course, if you go on the ground in Uttar Pradesh, you will find that caste still has lot of resonance. But on the other side, does the non-Yadav OBC vote bank of the BJP, which voted for big way for the BJP in the last elections, does it stay with the BJP or does it splinter away to the SP? That will, I think, determine this election. And also, fact, I think the role of the BSP in this election, because many are, I think, ruling out the BSP. That is the big trend. That the BSP that is going to be very interesting to watch out for, whether the BSP voter stays with them, whether the larger OBC vote consolidation stays with the BJP. But you know, interestingly, Aman, you talked about what each side says. Both the BJP and the SP voter is a very vocal voter. Somewhere in between of the extremities of these two very vocal voter classes is the not so vocal silent voter. And as you were saying, possibly that is the chunk that is going to be the most decisive. Okay, I'll go across to my colleague Aman in just a bit, but let's also listen into some voices from Varanasi, where I have been over the last few days. The Prime Minister campaigned here aggressively one more time, camping here for a couple of days, a road show and rallies, of course, and visits to the Kashi Vishwanath Dham, and a focus on the corridor, focus on the development work that they've done. Will all of that work? Because for the BJP, this is a matter of prestige. The Varanasi district and the Prime Minister's constituency, and they hope to expand the Modi factor across the districts surrounding Varanasi as well. So here are some voices from Varanasi. Anything by you? Young women, what are the issues for you this election? It's my first trip here, but it's good. It's good? It's been good, yeah. So, do you believe that, Varanasi showcases what is possible in India, if there is will, if there is commitment? Yeah, surely. Yeah? Yeah. Anything you want to add? हम लोग कलकत्ता से आए हैं। बहुत पूरे दुनिया पूरे देश से सब लोग यहाँ आए हुए हैं। Any comments? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। यहीं से हैं, तो आप बताइए कि यहाँ क्या बदलाव हुआ है? हर तरफ बदलाव है। क्या? मैं बचपन से यहाँ हूँ। हाँ। और बिजनेस के और नौकरी की वजह से बाहर रहा। अच्छा। काफी समय तक। हाँ। बहुत 2-3 साल बाद जब मैं अचानक आया घर, हाँ। और ये बाबतपुर वाला रास्ता वगैरह देखा, हाँ। मैं सरप्राइज हो के मैं अपने गांव जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ। अच्छा, ये सड़कें देख के कहीं मैं किसी और स्टेट में नहीं हूँ, किसी और स्टेट में नहीं। सच में या ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? यही सत्यता है। आप भी यहीं से हैं क्या? मैं बॉम्बे से। अच्छा। मैं यहीं से, मैं बचपन में यहीं पढ़ा यहीं में पैदा हुआ हूँ, यहीं से। तो योगी सरकार के काम से खुश हैं? मोदी जी से मैं खुश हूँ। अच्छा। तो आपने वोट कर लिया? एकदम वोट कर लिया हमने। खुश है? बहुत मोदी जी को जिता दिया। अच्छा, यहाँ पे मोदी जी क्या बहुत नारे हो रहे हैं, बट मैं आपसे ये करूंगी कि आप पार्टी का नाम ना लें, जो आपको मुद्दे लगते हैं वो बात बताएं। मुद्दा तो देखिए, यहाँ सबसे पहला मुद्दा तो विकास का है। हाँ। इतना विकास हुआ है कि कभी नहीं हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत ही अच्छा हुआ है, हमारी लेडीज के लिए अच्छा हुआ है, और हमारे
जितने भी है देश के लिए बहुत बहुत अच्छा हुआ है। It is all beaming, all the women here are beaming. खुश लग रहे हैं बहुत। हाँ, नहीं बहुत खुश है हम लोग के। बनारस में इतना ज्यादा विकास हुआ तो सभी जगह है, पर प्रैक्टिकल में जहाँ हूँ वहाँ की बता रही हूँ। चाहे मंदिर हो, रोड हो, लेडीजों को निकलना हो, कुछ भी हर तरह से हम लोग सुरक्षा महसूस करते हैं। रास्ते जाम से बच गए, लाइट से बच गए, मतलब हर सुविधा ही